नमस्कार। हेल्थ फॉर ऑल का आज का एपिसोड बहुत खास है। खास कई मायनों में। इसके लिए देश आजादी के 75 साल पूरे होने पर आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसके लिए अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हील फाउंडेशन ने भी इसी कड़ी में एक अनोखा सम्मेलन का आयोजन किया, पद्मा डॉक्टर्स का सम्मेलन। देश भर के 50 से ज्यादा पद्मा डॉक्टर्स को एक मंच पर इकट्ठा कर उन्हें न सिर्फ सम्मानित किया बल्कि हेल्थ केयर सेक्टर में उनके योगदानों को याद किया। कार्यक्रम के चीफ गेस्ट और देश के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख भाई मंडाविया की उपस्थिति में पद्मा डॉक्टर्स ने न सिर्फ अलग अलग विषयों पर अपने विचार रखे बल्कि हमारा मार्गदर्शन भी किया कि आगे हमें क्या क्या और करना है। आज के एपिसोड में हमने उन पद्मा डॉक्टर्स में से कई को आमंत्रित किया है। ये डॉक्टर्स देश के नामी गिरामी विशेषज्ञ हैं, जिनसे आज हम उनके कार्यक्षेत्र पर और संबंधित बीमारियों पर खुलकर बातचीत करेंगे। देश के कई पद्मा डॉक्टर्स को एक साथ इकट्ठा कर उनसे सवाल जवाब करना एक दुर्लभ और उत्साहित करने वाला क्षण होगा। पूरी उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा और ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव भी होगा। हमारा ये शो अगले 3 घंटे तक YouTube और Facebook पर लाइव रहेगा। तो कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम देखते हैं इंट्रो वीडियो और उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि हमारा बेस्ट ऑफ हेल्थ रेजोल्यूशन वीडियो क्या है। तो बेस्ट ऑफ हेल्थ रेजोल्यूशन वीडियो भी देखेंगे।
नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिताभ गुप्ता, PSRI हॉस्पिटल सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन। मैं आपको ये कहता हूँ कि अपने आप को स्वस्थ रखिए, साथ में अपने जो कहते हैं मानसिक स्वास्थ्य है उसका भी ध्यान रखिए। इसके लिए ज़रूरी है कि रात में आप सोने से पहले 1 घंटे मोबाइल या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से डिटैच होकर रहें और आपस में अपने परिवार से कम आधा घंटा, चाहे वो आपकी वाइफ हैं या आपके हस्बैंड हैं और आपके बच्चे हैं, उनसे मिलकर वो समय स्पेंड करें। ये बहुत आवश्यक है। धन्यवाद। Anyways, we are hearing a lot about the screen damage that is being done to an individual. And when it is a child, the neurons are anyway synapsing at a very, very high speed. So the screen is actually debilitating that neuronal connections, because of which there are deficits that are being seen. An absentia of social communication and more communication with the screen is definitely detrimental and should be avoided to the maximum. Screen time should be used in moderation. So we are saying that yes, screen is an important way of communicating in times of today, but it needs to be balanced out with other forms of communication. And again, as adults, I think we need to take the responsibility of this guidance. So for instance, if you are seeing that the child is not in a balanced or in a holistic way managing his life, which would mean, yes, he may be using screen for his online classes. So we can supplement it with doing something else for his extracurricular. So we don't need to put him onto a hobby which is also through the screen. We can put him onto some hobby, some play, some extracurricular which can be away from the screen. There can be some form of gaming that can be real-time gaming, because gaming also is a very, very screen-oriented process in times of today, because children don't have other ways of entertaining themselves. So if we can even use a playtime at home, which can be within the family, or it can be individually loaded to the child, with many individual games also that come about. You know, there are a lot of intelligent games, including simple ones like puzzles, like Sudoku, etc., which can be played individually. And there are other very simple games like Ludo, Snakes and Ladders, Scrabble, a lot of games like this. And in fact, there was a research which said that Ludo was one of the most sought after games online during the pandemic 2021. If we can translate a lot of this in real-time playtime, it would be very good. Allow the children to move out of the house, but with proper precautions. So have a balance so that, you know, we are able to socially connect with them, and there is a real-time communication happening, in which also as adults, I think we should give an active listening to our children. When our children want to speak, we should, one, start with open-ended questions, not in which there are monosyllabic answers that yes or no. For example, a lot of times we would ask, would you like to eat? So the answer would be yes or no. So engage in a conversation. What would you like to eat? This is a food pyramid. Explain to them, out of this food pyramid, this is what we can do, which would add a lot of immunity to ourselves. So engage in a conversation with your child. That would encourage him or her to engage back in a conversation with you. The conversations itself are becoming very, very limited, and thereby we are seeing communication deficits also develop. And yes, it has a direct correlation with autism spectrum as a diagnosis. I'm Dr. Kadam Nagpal, a neurologist from PSRI Hospital. The message what I give for everyone, my patients with neurological disorders and the population at large, is to stay fit, keep safe, especially in the times of this third wave threat looming at large in front of us. We need to stay safe and simultaneously indulge in all kind of fitness activities like yoga, whatever we can do back at home in order to achieve a good state of mind and a proper health. Thank you. नमस्कार, मैं डॉक्टर सरिता शर्मा, सीनियर कंसल्टेंट पेडियाट्रिशियन पुष्पावती सिंघानिया हॉस्पिटल में, और बच्चों के लिए मैं आपको ये सुझाव देना चाहूँगी
कि बच्चों में आप खान पान, उनकी फिजिकल एक्टिविटी का काफ़ी ख्याल रखें, क्योंकि कोविड टाइम में बच्चों ने सबसे ज़्यादा सफ़र किया है लॉकडाउन के कारण। वो घर के अंदर ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं और उनकी फिजिकल एक्टिविटी काफ़ी कम हो गई है, तो हमें इन सब बातों का ख्याल रखना है। जहाँ तक वैक्सीन की बात है, वैक्सीन अभी 15 साल से ऊपर बच्चों के लिए गवर्नमेंट ने उपलब्ध करा दी है और आने वाले समय में मैं ये उम्मीद रखती हूँ कि छोटे बच्चों के लिए भी वैक्सीन आ जाएंगी। और जब तक हमारे पास वैक्सीन नहीं है तब तक हमें अपने बच्चों को मास्क लगाने की संपूर्ण जानकारी देनी होगी और उन सभी को हमें हैंड हाइजीन की भी लाभदायक जानकारी सारी बतानी होंगी ताकि वो कोविड से सुरक्षित रहें। All the patients, I strongly suggest that there's in the studies that have been recently documented and in our own data, 15 to 30% of the patients are affected by what we call as the post-COVID-19 syndrome. This can manifest in 5 ways. One is chest pain. Second is simple breathlessness. The third one is some level of palpitations and dizziness, what we call as syncope and pre-syncope. All these patients who are having these kind of symptoms are and must immediately go and visit the doctor, because these are the patients who are having more chances of having an effect on the heart. But I suggest that all the patients, even if they are recovered, they must have a direct evaluation of the heart. And third thing is, all the patients who have suffered from moderate to severe COVID, 80 to 90% have underlying heart damage. So they should also have a baseline evaluation of the heart. In case the baseline evaluation yields some kind of dysfunction, my suggestion is that they should follow up their doctor every 6 months. But if the baseline evaluation of the heart shows a normal function, then probably a long-term or a routine follow-up of cardiac checkup is not needed in these patients. Yeah, next question is, COVID scare was a major factor in lesser hospitalization for heart failure and heart attacks. However, available data indicate now that significantly higher mortality due to these ailments than due to COVID. Your comments? Definitely. There is no doubt about it. Remember, what was happening in the COVID in India particularly was because of the lockdown, many of the seriously ill patients who are manifesting acute heart attack or who are having severe heart failure were unable to reach even their peripheral center. So the data that we actually have for causing the mortality is actually biased and actually not true. There were many patients who were dying because of the collateral damage that was happening. Remember, even today, the deaths because of COVID were significant. It was a high impact, but still the mortalities due to acute heart attack and heart failure were significantly high. Even our own hospital witnessed significant increase in presentations of the acute myocardial infarction. So it is very pertinent that while we are taking care of these illnesses, COVID is acting like and especially in those patients who are having comorbidities like diabetes, like hypertension, like obesity, all these patients are more likely to develop more severe complications like heart failure and also chances of an acute heart attack or acute myocardial infarction. So in case you have any of these symptoms, in case you have any kind of these problems, it is very pertinent to immediately report to the hospital. There is no doubt, in the largest registry that we have conducted along with Cardiological Society of India, we have clearly documented the underreporting. Still, the myocardial infarctions and heart failure were significantly high in the COVID times. It was only because of the underreporting that we were not able to get the exact data. It is very important. COVID is a very severe disease. It can create such a level of immune damage, and if the immune response is triggered, it will practically destroy and lead to catastrophic complications both on the heart muscle as well as on the rhythms of the heart. I'm Dr. Neetu Jain. I'm Senior Consultant in Pulmonary Medicine and Intensive Care at PSRI Hospital. So as a pulmonologist, a chest doctor, I would tell you to be safe, follow hand hygiene, follow wearing a mask all the time, and protect yourself from COVID, which is coming again for us. Second, then you have to protect your lung health by not smoking, by doing breathing exercise, adopting some yoga exercise, and keeping up with your medication and visiting your doctor in case you have any problem. तो अगर आपकी सांस की प्रॉब्लम बढ़ती है
या फिर आपको लगता है कि ठीक हो रही है, दवाई बदलनी है, इस मौसम में जबकि कोविड भी बढ़ रहा है, तो आपको डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही चलना चाहिए। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो न्यू ईयर पे रेजोल्यूशन बनाइए कि ये आपको छोड़ना है। ऐसे भी दिल्ली में और इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन है, हम सबको एक्सपोजर है, उसके ऊपर स्मोकिंग करना आपके सेहत के लिए बहुत बहुत हानिकारक है। Resilience is very nice that we spring back. You know, if you saw the Diwali festivals both the years, resilience is very good that we are getting back to work. The trouble is if the resilience becomes carefreeness, because the danger is not over yet. Scientifically, epidemiology will tell us. And so, like we said in the previous episode, to repeat very briefly, fear, apprehension, whatever traumatic experience needs to be channelized to being responsible. We need to be responsibly behaving. What all will it include? 1, healthy diet and food habits. 2, physical activity, appropriate physical activity. I'll come back to that in terms of COVID positive recovering person. But appropriate physical activity. Avoid or reduce tobacco and alcohol. Most importantly, remain psychologically as positive and well as you can. But I went through a COVID positive state. And I can tell you, science tells us, and I can tell you from experience, for 3 to 4 months, there is the experience of long COVID. There are different terms being used. There will be physical anergia, there may be lack of will, there may be those combined psychological and physical symptoms, at least for a few months. And I do believe, individually, clinically, and I think science is beginning to emerge, some, at least if not more than some of the unexplained sudden cardiac deaths in people after they became positive and recovered is because people were trying to get back to physical exercise of the previous level. And that is being one danger. That's never good. So you need to get back to physical activity in a very graded manner. People who are COVID positive and who have any comorbidity, obviously be very, very careful. There is no end to caution there. But most importantly, as we refer to persons with mental illness, how do PMIs with COVID positive state rehabilitate themselves, or how do family or clinical teams help them? People with long-standing mental illnesses who already had and who are on treatment, when they had COVID, there was a different set of problems. Now, how do you handle their rehab? People who developed syndromal, significant depression, anxiety, or stress syndrome because of COVID, who were not suffering from mental illness earlier, but who developed mental illness during the COVID period, how do they rehabilitate? Less of medicines, more of counseling and psychosocial support, more of healthy lifestyle, but monitoring that recurrence is possible. Let's remember that for people with pre-existing mental illness or people who develop new disorder, with the continuing threat and all the social hype that goes on, recurrences and relapses are common. And so the first thing we need to be aware of is to make sure that we pick up people who are in need of help. Welcome back to the online show Health for All. We are live on Facebook and YouTube. I'm Shankar Raj, President of Heal Foundation. The 46th episode is very special as we will be hearing from Padma awardee doctors who have shaped India's progress in healthcare. But for now, we start this session with Dr. Atreya Nihar Chandra, a certified nutritionist and naturopathy physician. Her forte is working with psychology, craving, and food. Her research is in the field of psychology, gut health, and food dynamics. She helps people reverse medical issues while working on their past experiences and how
they have developed patterns in lifestyle and food. She works towards reversing eating disorders and chronic medical issues of persons through childhood food they like to eat, memories with food and cravings of particular food. But for now, she'll be demonstrating on wall exercises that are very important. Over to you, Doctor. And you have time till 9 o'clock. Thank you very much. I'm audible and visible, right? Yes. Easily? Yes. All right. So I am a naturopathy doctor for the starters. I do have a MD in naturopathy. At the same time, I have a MD in naturopathy diets. At the same time, I have a MSc in food and nutrition. I have a MSc in neuroscience, and I also have a MSc in psychology. Now, yoga is something which is taught in naturopathy regularly, and I have been working out for a couple of years. So it's been 15 years where we are trying to work with women and women health. So wall exercises, which I'm going to show today, is something which I use with people, especially women who have varicose veins, who have ligament issues, who have ankle pain, knee pain, uric acid, sciatica pain, pelvic issues in terms of hip dislocations, in terms of urine incontinence. So these are a couple of exercises which are very simple to do, and they work in terms of building strength as well as working on your nervous system of your legs. So if you're somebody whose red cell distribution as well as blood circulation is having an issue, and you have major issues in terms of getting leg cramps and leg pains, and you struggle with flexibility when it comes to your hip, and it would help you in terms of understanding your work. All right. To get started, one, you have to touch your back to the wall. As you touch your back, adjust your pelvic to the wall. Relax your spine. Make sure your back is completely attached to the wall. Now, you can do this on your bed. You can do this on normal yoga mat and floor. All right. Make your legs straight. Now, press your leg gently on the wall. Now, this giving instruction, this is feet inside, this is feet outside. This is something which we will be doing a lot of time when we go ahead. Now, press your knees to the wall and take your feet inwards. As you take your feet inwards, toes close, toes open. 2 toes close, toes open. 3 toes open. 4 toes open. 5 toes open. 6, 7, 8, 9, 10. We'll start with ankle in, ankle out, 2, ankle out, 3, ankle out, 4, ankle out, 5, ankle out, 6, ankle out, 7, 8, 9, 10. You will see that there is a circulation which happens in your leg when you do this. Feet inwards, knees tight, legs straight, press your knee to the wall. Breathe in, breathe out, close and contract your butt, contract your vagina. 2, relax your back, close your contract your butt, contract your vagina. 3, relax your back and contract. 4, relax your back and contract. 5, 6, contractions will help you adjust your pelvic health. 6, 7, 8, 9, 10. Mula Bandha, Jala Bandha, contraction plays or Kegel plays a very important role in women's pelvic health. Take your band, dupatta, as you wear it on the upper part of your feet. You can take a yoga band, you can take a exercise band. I use a muffler, so you can use a stool also. Anything which will be comfortable to you. I've been using this one for many years, so I'm comfortable with this. Lift your leg up. Make sure your leg is straight. Stay there in one place. 1, breathe in, breathe out, relax your leg. 2, breathe in, breathe out. 3, breathe in, breathe out. 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Gradually loosen up. Second set, feet inside, pull your leg forward, hold 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Third set, feet inside, lift, hold 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fourth set, feet inside, hold 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fifth set, feet inside, hold 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax yourself. Change your leg, feet inwards, knees tight, legs straight, hold. 1, breathe in, breathe out, 2, breathe out, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax yourself. Make sure you breathe properly. Relax your back, feet inside. 1, breathe in, breathe out, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Third set, lift, hold 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fourth set, lift, hold 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fifth set, lift, hold 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sixth set, lift, hold 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Relax your back. Once your back is relaxed, put one leg on the floor, the other leg on the wall. This will help you in terms of keeping your spine health better, as well as this particular exercise will help you in terms of taking your lower back pain out. 1, breathe in, breathe out. 2, breathe out. 3, breathe out as you pull your leg forward. 4, breathe out. 5, breathe in, breathe out. 6, breathe out. 7, breathe out. 8, 9, 10. Change your leg, change your side. Feet inwards. 1, breathe in, breathe out. 2, breathe out. 3, breathe out. 4, breathe out. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax your back. Gradually take both the leg up. Next exercise, feet inwards. Where your leg, pull your leg forward. 1, breathe out. 2, breathe out. 3, breathe out. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. How does this help? This will help you create a better stretch in your leg and your butt. Now, next exercise, split. As you split, do the maximum split you can. Wear your band on one leg, breathe in, pull your leg forward. 1, 2, 3. Breathe out as you pull forward. 4, 5. Breathe out. 6. Breathe out. 7, 8, 9, 10. Change your leg. Take your feet inside. Breathe in. Breathe out. 2. Breathe out. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Take your feet inwards. Next exercise. Take your feet inwards. Stay in Baddha cone. Rotate your shoulder back, chest out, chin up. Press your thighs to the wall. This is a place where you can press as much as you want. Relax your spine. Breathe in, breathe out, relax your spine. Make sure your whole spine is on the floor. 2, breathe out, relax your spine. Make sure your head is completely on the floor. 3, breathe in, breathe out. 4, breathe out. 5, 6,
7, 8, 9, 10. Relax your back. Take your leg a little upwards. Press your spine 1, press your spine 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gradually take your leg a little more up. Press your legs on the wall. Breathe in, breathe out. 2, breathe out. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gradually make both the legs straight. We'll start with Ardha Titli Asana. Take your feet inside, knees tight, legs straight. Take your feet inwards. Breathe in, touch your chest. Breathe out, press towards the wall. 2, breathe out. 3, breathe out. 4, breathe out. 5, breathe out. 6, breathe out. 7, breathe out. 8, breathe out. 9, 10. Breathe out and loose. Change your leg. Feet inwards. 1, breathe in. Breathe out. 2, breathe out. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax your back. Take one leg behind the other. Just behind the other. Make the other leg straight. Wear your band, dupatta. Feet inwards, right on the upper part of it. Stretch forward. 1, breathe in, breathe out. Be very gentle with this stretch. 2, breathe out. 3, breathe out. 4, breathe out. 5, breathe out. 6, breathe out. 7, breathe out. 8, breathe out. 9, 10. Change your leg. Feet inwards. 1, breathe out. 2, breathe out. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Breathe out and loose. Change your leg. Feet inwards. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Change your leg. Feet inside. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax your back. Gradually make both the legs straight. Adjust your pelvic on the floor if you're off the wall. Relax your spine. Make your legs straight. We'll start with calf muscles. Bend your knee. Keep a slight gap between your two legs. 1 tap, heel rise. 2, heel rise. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Relax your legs. Massage your thighs. Relax your legs.
Relax your spine on the floor. Stretch your hands over your head. Take your feet inside, then feet outside. 2, feet outside. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Stretch your spine. 9. Stretch your spine. 10. Make a gap. We'll start with rotation. 1. Breathe in. Breathe out. 2. Breathe out. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anti-clockwise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax your back. Adjust your spine to the floor. We'll start with butt. Bend your knee. Join both the legs together. Now, if joining legs is together is difficult, then make a little gap. Bend your knee. Now, this will help you in an easy hip rise. If this gives a lot of burning sensation, immediately stop and just relax your back. If you're new to this, join both the legs together. Bend your knee. Breathe in. Breathe out. 2. Breathe out as you lift up. 3. Breathe out. 4. Breathe out. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gradually loosen up. Relax your back. You might feel a little burning sensation on your thighs, but that's absolutely normal. It has to burn a little for you to feel that you're working out. Do not worry at all. It will not create any pressure on your knee. It will have zero pressure on your thighs. So if you have ACL or side ligament tears, or if you have meniscus tear or any rheumatoid arthritis issues, do not worry at all. This is absolutely safe. Split, bend your knee, lift up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. At a beginner level, this is good. At an advanced level, you can combine contractions with this. It will help you to build a stronger core. Join both the legs together. 1, breathe in. Breathe out, contract the vagina. 2, contract. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax your back. Split. Bend your knee. 1, breathe in. Breathe out. 2, breathe out. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax your back. You might feel your hip is burning, but it's absolutely okay. It will settle down gradually. Now you're away from the wall, which is a good thing. Lift your leg up. 1, 2, 1, 2, down. 2, 1, 2, 1, 2, down. 3, 1, 2, 1, 2, down. 4, 1, 2, 1, 2, down. 5, breathe in. 1, 2, 1, 2, breathe out. 6, breathe in. 1, 2, 1, 2, breathe out. 7, breathe out. 8, 1, 2, 1, 2, down. 9, 1, 2, 1, 2, down. 10, 1, 2, 1, 2, down. How does it help? It helps in terms of bringing strength in your ankles. Relax your spine. We'll start with doubles. Up. 1, 2, down. 1, 2, up. 1, 2, down. 1, 2, 3. 1, 2, down. 1, 2, 4. Down. 1, 2, 5. Down. 1, 2, 6. Down. 1, 2, 7. Down. 1, 2, 8. Down. 1, 2, 9. Down. 1, 2, 10. Down. 1, 2. Change your leg. Lift your leg up. 1, 2, 1, 2, down. 2, 1, 2, 1, 2, down. 3, 1, 2, 1, 2, down. 4, 1, 2, 1, 2, down. Make sure this leg is straight. 5, 1, 2, 1, 2, down. 6,
down, 7, 1, 2, 1, 2, down, 8, 1, 2, 1, 2, down, 9, 1, 2, 1, 2, down, 10, 1, 2, 1, 2, down. Doubles, up, 1, 2, down, 1, 2, up, 1, 2, down, 1, 2, 3, 1, 2, down, 1, 2, 4, down, 1, 2, 5, down, 1, 2, 6, down, 1, 2, 7, down, 1, 2, 8, down, 1, 2, 9, down, 1, 2, 10, down, 1, 2. Relax your back, bend your knee, roll to your sides, roll on your spine, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. You can do a basic spine twist as you close the exercise. Make your legs straight, turn completely to one side, stretch your hand to the opposite side, look the opposite side, relax your back, breathe in, breathe out, 2, breathe out, relax your spine, 3, 4, relax your spine, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gradually turn and change to the other side. Stretch the opposite side. Look the opposite side. Relax your spine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Very gradually straighten up. Now at a beginner level, this is a good start for a workout. If you are at an advanced level, you can continue a little more, and this will help you in terms of getting a better strength in your spine. It will help you in terms of building a better pelvic strength. Initially, when you are starting, you might feel a little blood rush when you get up, but it's absolutely fine. It will settle down as you sit straight. At the same time, if you feel giddy and pukish, just do not drink water immediately. That's the first and foremost thing. Relax your back, touch your back to the wall. Sit for some time. You can chant Om, relax your spine. Make sure your whole back is touching the wall. My original pattern of working is I do Bhamri Pranayam or Bhamra Pranayam along with this. But if you're new to it, you can start the practice with chanting 5 long Om. Relax yourself, then gradually move on to other exercises. You need to give a gap because the blood rush which you might feel in the posture might be something which might make you very hyperactive. And in yogic practices, we like to keep our breath steady and plain for it to function better. We will start with 5 long Om. Relax your back. Rotate your shoulder back, chest out, chin up. We'll start with spine stretches. After a good wall workout, it's good to stretch your spine before you move on with your day. So we'll start with side stretches. Breathe in, breathe out, try it against the wall. Make sure your back is straight. 2, breathe out, try touching your head to the floor. 3, breathe in, breathe out. 4, breathe out. 5, breathe out. 6, breathe out. 7, breathe out. 8,
Breathe out. 9. Gradually. 10. Relax your spine. Sit in Baddha Cone. Adjust your pelvic to the floor. Adjust your spine to the floor. Make sure your back is absolutely straight. Press your thighs to the floor. Relax your back. 1. Breathe in. Breathe out. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stretch forward. 1. Breathe in. Breathe out. 2. Breathe out. 3. Stretch forward. Relax your spine. Bend from your back. 4. Breathe in. Breathe out. Last stretch. 5. Breathe in. And breathe out. Stretch to your side. Twist as you twist. Stretch to your side. 1. Breathe in. Breathe out. 2. Breathe out. 3. Breathe out. 4. Breathe out. 5. Breathe out. 6. Breathe out. 7. 8. 9. 10. Relax your back. Check yourself once. If you have any pain, the entire session was done keeping geriatrics and medical health condition in mind. If you are a fitness enthusiast or you have been a trainer, you might find this as a very mild workout. But if you have patients who have just recovered from medical issues, or if they are people who are recovering from surgeries, this is a good start to help you relax your spine, help you relax your back. If you have any questions, do let me know. I'll be very happy to answer them. Mr. Atreya, Yeah. most of the exercises that you have shown puts immense pressure on the tummy. So, what is the gap to be given after you take food in order to do these exercises? Generally, I prefer to do this empty stomach first thing in the morning. At the same time, it can be done after 45 minutes of meal. 45 minutes is good enough as a gap. Okay. It can be done any time of the day. And it is the exercises I showed is done to actually build in pelvic and core strength. So everyone needs to be a little gentle when they start. And these are the beginner level exercises. So keeping my exercises are generally nerve oriented and they're influenced by physiotherapy. So this will help in terms of building strength in legs as such. The pelvic region is supposed to be very important for women, especially those who are pregnant. Now, during the first trimester or second, can this be done to open up the pelvic muscles? I do that. I have a RYT certification in terms of so the basic exercises which you saw, we generally do this with a back support by keeping a pillow or a thick bed sheet below the back or silicone seats below the back. And we do the basic leg stretches, not the lifting part, which we did, the hip lifting part. That is something which we avoid between first 3 semesters. After the 6 semesters, we also do the lifting part, but we do it very gently. And we generally do it under the guidance instead of watching a video, because once you see a person, it's easier to see how much strength they have and how much they can go up. But I do use them in pregnancy cases because it helps them in terms of normal delivery, the splits we do or the stretches we do. So does this lead to ease of delivery? Yes. And most of them must be natural.
Yes. You have combined so many things: food, yoga, nature, a lot of things. So what exactly is your practice? Do you combine all this in your practice, or? Yes, it's an integrated practice. It started with me doing, so I have been a handicap for 4 years of my life. I've been paralyzed for 4 years. I started studying naturopathy for myself. Then eventually it became a profession. I'm almost touching 40 and it's been 15 years practicing. So I started as a basic naturopathy doctor, gradually picked up food and nutrition. Actually, I did my food and nutrition first. Then I did my MD, going back to the university. Then I have a couple of other diplomas. I keep studying. So my major forte of work is food. And I do have ligament tears and I do have knee issues. I do have a pelvic issue. I have a hip crack because of my accident. So my forte is to work with people who have medical conditions. So I'm not a fitness trainer, but I'm a doctor who knows where it hurts, especially for people who are having broken issues. So how important is food in the process of healing? I think 90%. Why? Because if we do not associate life with food, it will not work. So if somebody's having issues with food, it leads to anorexia. At the same time, there is a severe mental disorder. We call them FATs, that is fear, anxiety, tension, and stress. So when the fat feeling comes, it starts affecting your gut health. And that's where all the medical issues starts, when your body stops absorbing nutrition out of the basic food that we eat. So organic se bhi organic cheese or cold press se bhi better oil, nothing will work if fear, anxiety, tension, and stress, that is a fat feeling, is dominant when a person is trying to have food. And it's like the basic stuff, like food and water. Sabko khana padta hai, jisko bhi zinda rehna hai. So that's the root. That's wonderful. You're doing some amazing work, and I like your work on psychology and food. I think it's an amazing topic. I will now ask my co-host Kishore to ask you a few questions. Thank you, sir. डॉक्टर अत्राई, आजकल मड थेरेपी की बहुत बात चलती है. हाँ जी सर. तो किस तरह के प्रॉब्लम्स में मड थेरेपी सबसे ज्यादा कारगर है और क्या है ये प्रोसेस? So when mud therapy is done, the soil is dug out from a deeper part of the earth where it is non-polluted. It is not having fertilizers or genetically modified activities to the soil. And generally, the mud is soaked for a very long time and it is properly cleaned. It is made sure that there is nothing except mud into it. In a couple of naturopathy centers, they also mix neem to it to improve the healing properties of the soil. And it is used, one, to regulate the body heat. Two, it helps in terms of curing any charma rog or any skin issues people have. It's one of the therapies which can be used for psoriasis, eczema, to acne, seborrheic dermatitis, you name it, and it can be used provided the timing is known. So with every single medical condition, the timing for which the mud is applied, it varies from patient to patient. It cannot be a one blanket treatment. So even when people go to naturopathy centers, they have their individual consultations, and post that, depending on their issue, they will time the mud in which it would be applied. It is mostly done after body massage and steam, followed by a mud therapy before people go for bath, so that the toxins in the body is completely released. And it is done to make sure that your skin breathes, your nervous system, blood circulation improves. For people who have extreme gastritis or gut issues or GERD issues, at the same time, if people are struggling with weight, if they go to a naturopathy center for rehabilitation for 10 days or 15 days,
they would have a wonderful time getting a body massage followed by a sauna. एक बात और बताइए कि मड थेरेपी के बाद आपने अभी गैस्ट्राइटिस का जिक्र किया है, तो सीवियर एक्यूट क्रोनिक गैस्ट्राइटिस का क्या परमानेंट सॉल्यूशन है? क्योंकि मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं कि वो कुछ भी खाएं तो उन्हें ऐसा अटैक होता है कि चेस्ट से लेकर पेट तक बहुत तेज दर्द होता है, बहुत तेज दर्द होता है, मतलब अटैक की तरह आता है। 60% of the heart attacks are caused by severe acid reflux and a chronic acid reflexes. Okay. I work with Medics group of hospitals. I actually work with 3 hospitals, and my forte is clinical nutrition. I work with hardcore medical conditions. And one of the basic things, there are 2 things actually. One, your vitamin D3 needs to be proper. If your vitamin D3 is below 50 in the parameters, your absorption of food or digestion will slow down. So if you're somebody who has very regular vitamin D3, which is lower than 50, it will trigger frequent episodes of gastritis or gastric attacks or acid reflexes. The pH of the stomach will be completely going for a toss. Number 2, if your vitamin D is less than 20, you will become a chronic gastritis patient as such. दूसरी बात, लोग पानी बहुत कम पीते हैं. So 20 kg needs to drink 1 liter of water, 40 kgs 2 liters of water, 60 kgs 3 liters of water, 80 kgs 4 liters of water, 100 kgs 5 liters of water. So your water intake needs to be as per your BMI and weight. But होता क्या है, लोग पानी पीते जब गला सूख जाता है. So when actually the throat is dry, you're dehydrated. Okay. तो गला सूखने के बाद अगर पानी पिएंगे तब एसिड रिफ्लेक्स ज्यादा होगा, बिकॉज स्टमक का पीएच डिसबैलेंस काफी ज्यादा होगा. थर्ड थिंग एंड द लास्ट थिंग इज food intolerance. With corona, I had 3, because I work in a hospital setup, I have 3 times corona in 3 years. And every year, my food intolerance has increased. Corona से पता नहीं बाकी health conditions किस लोगों की खराब हो ना हो, major health condition में gut issues आते हैं जिसमें food intolerance has increased. 90% of the Indians are corn, tea and gluten intolerant. It's just that हमारे में कोई टेस्ट नहीं कराता. So based अगर किसी भी आदमी को continuously gastric issues हो रहे हैं, they need to get a food intolerance test done. It is done by all the labs in India. And जो चीजें नहीं खानी है, which are in red and yellow markers, they need to be avoided at least for a year for the gut to start functioning on its own. Then उसके बाद आपको gradually immunity build up करनी पड़ेगी of your gut health. But initially वो avoid करना पड़ेगा. जैसे किसी को sunflower seed से एलर्जी है, उसे sunflower oil से भी एलर्जी होगी. तो अगर घर का बेसिक खाना sunflower oil में बनेगा तो severe acid reflux or severe gut issues होंगे. And in the intolerant test, you will get sheep milk, camel milk, cow milk, buffalo milk. So if you are intolerant to any of the milk, और इंडिया में सबसे ज्यादा काउ मिल्क बिकता है, so आप अगर कोई भी चीज गाय के दूध की खाएंगे तो इश्यूज आएंगे. Similarly, there is something called baker's yeast and brewer yeast. So जितने भी liquid products market में है, they generally have brewer yeast. And ज्यादातर जो biscuits, bread सब बिकते हैं, they have baker yeast. So if you are allergic to any of it, it will create severe gastric and other health issues. Thank you, Dr. Atray. Over to you, Mr. Shankar. Thank you, Dr. Atray. I think it was a wonderful session. Though I would like to have, I should have asked you more on food, but this is a wall exercise. Probably some other day we will come back to food, which is probably your forte. Thank you very much for being with us. Thank you. Thank you so much. Take care. Thank you. Yeah, Bye. We now have the session intro video.
Welcome back. This show is live on Facebook and YouTube. Heal Foundation, with the support of BW Healthcare, organized India's first Padma Doctors Congregation, a first of its kind felicitation of Padma awardee doctors for their human services and innovative ideas, which have brought about a drastic transformation in the healthcare landscape in India. In Bharat Swasth Mahotsav, held on Monday, August 22nd, 2022. The Padma Doctor Mahotsav turned out to be historic because of the endearing participation of all Padma doctors and the gracious presence of our chief guest, Dr. Manshukh Mandavia, Honorable Union Minister for Health and Family Welfare, Chemical and Fertilizers, Government of India, and guest of honor, Dr. Bharti Pawar, Minister of State of Health and Family Welfare, Government of India. We now run glimpses of the event, and this will be followed by introduction of Padma doctors at Bharat Swasth Mahotsav and glimpses of Bharat Doctors Congregation. Over to the videos. नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर हमारा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। ये एक बेहतरीन मौका है जिसमें हम अपने ग्लोरियस हिस्ट्री, अपनी संस्कृति और अपने महान सेनानियों को याद कर आनंदित हो रहे हैं। इस कड़ी में अगर देश के डॉक्टर्स के योगदानों की बात न करें तो ये महोत्सव अधूरा लगेगा। इसी को ध्यान में रखकर हमने पद्म पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर्स के योगदानों को याद करने के लिए पद्मा डॉक्टर्स सम्मेलन का आयोजन किया है। उन डॉक्टरों को जिन्होंने देश के हेल्थ केयर सिस्टम की दिशा और दशा बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह हमारा सौभाग्य है कि हमने आज ऐसे तमाम पद्मा डॉक्टर्स को एक मंच पर लाने का काम किया है। ये हेल्थ केयर सेक्टर्स के हस्ताक्षर हैं जिन्होंने देश के डॉक्टर्स की क्रेडिबिलिटी को न सिर्फ स्थापित किया बल्कि अफोर्डेबल और एक्सेसिबल स्वास्थ्य सेवा का मार्ग प्रशस्त किया। आज हम इनको सम्मानित नहीं कर रहे हैं बल्कि इनकी उपस्थिति से हम सम्मानित हो रहे हैं। इनके अनुभव और ज्ञान से लाभ उठाकर हेल्थ केयर सिस्टम को और समृद्ध कैसे बनाएं, इस बात पर विचार करने की जरूरत है। Dr. Dinesh K. Bhargava is a former professor of gastroenterology, AIIMS, New Delhi. He is known for introducing diagnostic and therapeutic endoscopic procedures at AIIMS, New Delhi. The Government of India conferred on him Padma Shri in 2008. Dr. Prahlad Kumar Sethi is an Indian physician, medical writer, and the chairman of the Department of Neurology at Sir Gangaram Hospital, New Delhi. He is the founder of the Delhi-based Brain Care Foundation, which spreads awareness about brain illness. The Government of India conferred on him Padma Shri in 2002. Dr. D.S. Rana is an Indian nephrologist and chairman of the Department of Nephrology at Sir Gangaram Hospital, New Delhi. He founded Parvati Education and Health Society, which operates a small 5-bedded hospital in his native village. The Government of India conferred on him Padma Shri in 2009. Dr. Pradeep Kumar Chobe is an Indian surgeon known for laparoscopic and bariatric surgeries. He is founder of Minimal Access Metabolic and Bariatric Surgery Center at Sir Gangaram Hospital, New Delhi. He has performed over 80,000 major minimal access surgeries between 1992 and 2018. The Government of India conferred on him Padma Shri in 2002. Dr. Vijay Kumar Vinayak Dongre is a veteran dermatologist and social worker dedicated his life to working for leprosy patients. As per estimates, there were approx 40 lakh leprosy patients in India in 1981, but after the efforts of Dr. Dongre and others,
has come down to 83,000. The Government of India conferred on him Padma Shri in 2022. Dr. Kamal Kumar Sethi is an Indian cardiologist, medical academician and administrator. He is the chairman and managing director of the Delhi Heart and Lung Institute. He is known for the performance of first catheter ablation in India. The Government of India conferred on him Padma Shri in 2006. Dr. Ram Harsh Singh was the founder and vice chancellor of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University. He is an emeritus professor of Banaras Hindu University and national professor at Ministry of Ayush, the Government of India. His research on Ayurveda has been documented by way of over 200 research papers and 15 textbooks. The Government of India conferred on him Padma Shri in 2016. Dr. K.M. Cherian is an Indian heart surgeon. He performed India's first coronary artery bypass surgery and considered a pioneer of pediatric cardiac surgery in the country. The Government of India conferred on him Padma Shri in 1991. Dr. Keval Kishan Talwar is a renowned cardiologist and the former chairman of Medical Council of India. He performed the first implantation of implantable cardioverter defibrillator therapy in South Asia. The Government of India conferred on him Padma Bhushan in 2006. Dr. Alka Kriplani is an Indian gynecologist known for her contributions to the field of reproductive endocrinology and gynecological endoscopy. The Government of India conferred on her Padma Shri in 2015. Dr. Arvind Lal is an Indian pathologist, medical administrator and chairman and managing director of Dr. Lal Path Labs, a medical diagnostic center. Dr. Arvind Lal has brought international recognition to Indian healthcare industry in the form of accreditation from College of American Pathologists. The Government of India conferred on him Padma Shri in 2009. Dr. Arunoday Mondal, popularly known as Sundar Banar Sojan, who established Sojan, a charitable outdoor clinic in 2000 at Roypara, Sahib Khali, North 24 Paranganas in the remotest areas of Sundarban, where there was no connectivity, no electricity and scarcity of drinking water. The Government of India conferred on him Padma Shri in 2020. Professor Dr. M. Wali is an Indian cardiologist. Currently, he is working as a consultant at Sir Gangaram Hospital, New Delhi. He has the distinction of serving 3 presidents of India, Mr. R. Venkataraman, Dr. Shankar Dayal Sharma, and Dr. Pranab Mukherjee. He is credited to have introduced geriatric medicine in India. The Government of India conferred on him Padma Shri in 2007. Dr. Digambar Behra is an eminent pulmonologist in India. He is a pioneer in lung cancer chemotherapy and founder-president Indian Society for Study of Lung Cancer. The Government of India conferred on him Padma Shri in 2020. Dr. Trilochan Sinclair is an Indian interventional cardiologist, medical administrator, writer and chairman at Fortis Heart and Vascular Institute, Gurugram and Fortis Hospital, Vasant Kunj, New Delhi. He has performed over 25,000 coronary, renal, carotid and peripheral angioplasties. The Government of India conferred on him Padma Bhushan in 2005. Dr. A.K. Grover is a prominent name in the realm of ophthalmology. He is credited to have brought the specialty of oculoplastic surgery to the forefront while being at Sir Gangaram Hospital, New Delhi. The Government of India conferred on him Padma Shri in 2009. Dr. Malvika Sabharwal is an Indian gynecologist and obstetrician at the Nova Speciality Hospitals of Apollo Healthcare Group. She is known to have conducted several free health camps for women, children and employees. The Government of India conferred on her Padma Shri in 2008. Dr. Chandrakant S. Pandav is the former head of Department of Community Medicine at AIIMS, New Delhi. His instrumental role in the iodinization of salt in India made him the Iodine Man of India. The Government of India conferred on him Padma Shri in 2021. Dr. Purushottam Lal is an internationally acclaimed Indian interventional cardiologist. He performed the first case of non-surgical heart hole closure in the world. He founded Metro Heart Institute in 1997 for quality and affordable healthcare. For his contributions, the Government of India conferred on him Padma Vibhushan in 2009,
Padma Bhushan in 2003. Dr. Ganesh Kumar Mani is the chairman of Cardiothoracic Vascular Surgery at MAC Super Speciality Hospital, Saket City Hospital, New Delhi. He is the cardiothoracic and vascular surgeon reported to have performed over 20,500 coronary artery bypass surgeries. He is considered a pioneer of a technique known as beating heart coronary artery bypass. The Government of India conferred on him Padma Shri in 2013. Dr. Ashok Seth is an Indian interventional cardiologist credited with the performance of over 50,000 angiograms and 20,000 angioplasties. He has pioneered numerous angioplasty techniques for India and the Asia Pacific. The Government of India conferred on him Padma Bhushan in 2015 and Padma Shri in 2003. Dr. Brijendra Kumar Rao is an Indian anesthesiologist and critical care specialist. He has done pioneering work in respiratory care practices in India. The Government of India conferred on him Padma Bhushan in 2009. Dr. Rajesh Kumar Grover is an Indian oncologist, former director and chief executive officer of Delhi State Cancer Institute, New Delhi. He has propounded various new concepts in radiology and oncology and its technological innovations. The Government of India conferred on him Padma Shri in 2014. Dr. Jitendra Mohan Hans is an Indian otorhinolaryngologist, medical researcher and inventor of Hans speech valve for speech rehabilitation and laryngeal cancer surgery. The Government of India conferred on him Padma Shri in 2005. Dr. Ravikant is a professor of surgery at Sharda University. He is the former director of AIIMS Rishikesh and vice chancellor of King George's Medical University. He has been instrumental in starting the organ donation program and retrieval of organs from brain dead patients. The Government of India conferred on him Padma Shri in 2016. Dr. Jagat Ram is an ophthalmologist and former director of Postgraduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh, India. He organized over 150 free mega camps for the rural population. The Government of India conferred on him Padma Shri in 2019. Dr. Shiv Narayan Kuril is an Indian pediatric surgeon. He is an academician, writer, administrator and HOD of pediatric surgery at King George's Medical University, Lucknow, UP. Pioneered the single-stage surgical technique for congenital problems in India. The Government of India conferred on him Padma Shri in 2016. Dr. Raman Kapoor is an Indian medical acupuncturist and author. He is also the head of Department of Acupuncture at Sir Gangaram Hospital, New Delhi. He has written 4 books on acupuncture and soft lasers. His papers and articles have been published in various national and international journals. The Government of India conferred on him Padma Shri in 2008, making him the first acupuncturist to receive the award. Dr. Professor A.K. Bhalla is an eminent nephrologist from New Delhi. He has played a pivotal role in starting CAPD in India. He pioneered in peritoneal dialysis as a modality for renal replacement therapy in India. The Government of India conferred on him Padma Shri in 2008. Dr. Randeep Guleria is an eminent pulmonologist and the current director of AIIMS, New Delhi. He is credited with efforts in establishing a Center for Respiratory Disease and Sleep Medicine at AIIMS, which is reported to be first in India. The Government of India conferred on him Padma Shri in 2015. Dr. Shadab Mohammed is the professor and HOD of Oral and Maxillofacial Surgery, King George's Medical University. He has got published a book on oral and maxillofacial surgery. The Government of India conferred on him Padma Shri in 2019. Dr. Balbir Singh is a renowned Indian interventional cardiologist and cardiac electrophysiologist. He has pioneered several new techniques in invasive cardiology. The Government of India conferred on him Padma Shri in 2007. Dr. Balram Bhargava is the former Director General of Indian Council of Medical Research. He is Secretary of India's Department of Health Research since April 2018. Pioneered the development of indigenous low-cost coronary stents that have benefited several thousand patients. The Government of India conferred on him Padma Shri in 2014. Dr. Rajesh Kotecha is an Indian Ayurveda physician. He is Secretary of Ministry of Ayush in the Government of India.
He is the author of concept of Atattva Bhinivesha in Ayurveda, which discusses minor psychiatric disorders within Ayurveda parameters. The Government of India conferred on him Padma Shri in 2014. Dr. M.V. Padma Srivastava is an Indian neurologist. She is the professor of neurology at AIIMS, New Delhi. The Government of India conferred on her Padma Shri in 2016. Dr. Soumitra Rawat is an Indian surgical gastroenterologist. He is the head of surgical gastroenterology and liver transplant at Sir Gangaram Hospital, New Delhi. He and his team are credited with introducing robotic and laparoscopic surgery for gastrointestinal cancer to India. The Government of India conferred on him Padma Shri in 2015. Dr. Anil Kohli is an Indian dental surgeon. He is a medical administrator and the former president of the Dental Council of India. The Government of India conferred on him Padma Bhushan in 2005 and Padma Shri in 1992. Dr. Yash Gulati is an Indian orthopedic surgeon and senior consultant orthopedic surgeon at Indraprastha Apollo Hospital, New Delhi. He pioneered the concept of gyroscope-based computer navigation for knee replacement in India and has the largest series of total knee replacement with eye assist navigation technique. The Government of India conferred on him Padma Shri in 2009. Dr. Praveen Chandra is an Indian cardiologist and chairman of interventional cardiology at Medanta, the Medicity, Gurgaon. He has performed first percutaneous aortic valve implantation without surgery in India. The Government of India conferred on him Padma Shri in 2016. Dr. Mahipal S. Sachdev, an Indian ophthalmologist, ventured into the technique of phacoemulsification for cataract surgery in India. He pioneered blade-free femtocataract technology. He installed Zaraptex. He introduced phakic IOLs in India. The Government of India conferred on him Padma Shri in 2007. Dr. Anup Mishra is an Indian endocrinologist and former honorary physician to Prime Minister of India. He is credited with developing dietary and exercise guidelines for Indians. The Government of India conferred on him Padma Shri in 2007. Dr. Neelam Clare is an Indian neonatologist. She is known for her pioneering work on neonatal intensive care and ventilation. The Government of India conferred on her Padma Bhushan in 2014. Dr. Harsh Mahajan is an Indian radiologist and one of the pioneers of imaging technology in India. He has served as the honorary radiologist to the President of India and as honorary consultant to the International Atomic Energy Agency. The Government of India conferred on him Padma Bhushan in 2002. Dr. Mahesh Verma is an Indian prosthodontist. He has helped develop MAIDS, the dental wing of Maulana Azad Medical College. The Government of India conferred on him Padma Shri in 2014. Dr. Amrish Mittal is the head of endocrinology and diabetes at Max Healthcare, Pan-Max Saket, New Delhi. He established India's first bone density measurement system and osteoporosis services in SGPGIMS, Lucknow in 1997. The Government of India conferred on him Padma Bhushan in 2015. Dr. Lalit Kumar is an Indian oncologist known to have contributed to the development of low-cost medical facilities in Delhi. The Government of India conferred on him Padma Shri in 2014. Dr. Jagdev Singh Guleria is the former Dean and Professor of AIIMS, New Delhi. He is the Senior Consultant of General Medicine at Sitaram Bhatia Institute of Science and Research and Emeritus Professor of the National Academy of Medical Sciences. The Government of India conferred on him Padma Shri in 2003. Dr. Upendra Kaul is the Chairman of Batra Heart Center Institute at Batra Hospital and Medical Research Center, New Delhi. He is known for his expertise in procedures such as percutaneous cardiopulmonary bypass, rotational and directional atherectomy, coronary stenting, and percutaneous laser myocardial revascularization. The Government of India conferred on him Padma Shri in 2006. Dr. Randhir Sood is the chairman of Medanta Institute of Digestive and Hepatobiliary Sciences. He is credited with establishing and integrating therapy with GI endoscopy in India through training and live workshops. The Government of India conferred on him Padma Shri in 2008.
Dr. Sandeep Guleria is a senior consultant surgeon in general surgery, GI surgery, and transplantation at Indraprastha Apollo Hospital. He is credited with having done the first 2 successful kidney pancreas transplants in the subcontinent. The Government of India conferred on him Padma Shri in 2019. Dr. M. Khalilullah is an Indian cardiologist. He is former HOD of Cardiology, GB Pant Hospital, New Delhi. He has authored the first textbook of cardiology in India. He is credited to have developed India's first indigenous pacemaker. The Government of India conferred on him Padma Bhushan in 1990 and Padma Shri in 1984. Dr. Nitish Nayak is an Indian cardiologist. He has done pioneering work in the field of interventional cardiology. The Government of India conferred on him Padma Shri in 2014. आज़ादी के 75 साल में हासिल उपलब्धियों के बाद आने वाला 25 साल देश की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, खासकर पद्मा डॉक्टर्स की भूमिका को लेकर। देश को अभी कई बड़ी स्वास्थ्य चुनौतियों से लड़ना है, मसलन टीबी, अनीमिया, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, वुमेन एंड चाइल्ड हेल्थ, रूरल हेल्थ आदि। और ये सभी पद्धतियों को साथ मिलकर करना होगा, यानी ऑल्टरनेट मेडिसिन के साथ मिलकर, और तभी अगले 25 साल का लक्ष्य पूरा हो सकेगा। इंडिया को दुनिया का हेल्थ कैपिटल बनाने का लक्ष्य। भाई और बहनों, अगर भारत के हेल्थ केयर सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करना है, स्वस्थ समाज का निर्माण करना है, तो हमें होलिस्टिक सोच के साथ काम करना होगा। पारंपरिक और आधुनिक इलाज की साझा ताकत को मजबूत करना है। आयुष और मॉडर्न हेल्थ केयर का एक साथ एक बराबर विकास होगा, तभी बेहतर स्वास्थ्य समाधान हम तैयार कर पाएंगे। साथियों, आयुष्मान भारत योजना इसी सोच का परिणाम है। We now have the session intro video.
Welcome back. We now move on to session 2 titled 75 Years of Independence, Evolution of Healthcare Sector. We have with us well-known Padma awardee doctors. Joining us is Dr. Anup Mishra, Chairman, Fortis CDOC Center of Excellence for Diabetes, Metabolic Diseases and Endocrinology, New Delhi, and Director, National Diabetes, Obesity and Cholesterol Foundation and Diabetes Foundation, India. He has extensive academic experiences in universities overseas, and as WHO Fellow, he has worked in a Royal Free Hospital and of Medicine and Endocrinology at Southwestern Medical Center at Dallas, Texas, USA. In India, Dr. Mishra has been a participant of the top advisory committees relating to diabetes, cardiovascular diseases, and nutrition, with more than 30 years of experience in teaching, services, research, and community health intervention programs. He has published more than 300 scientific papers, chapters in the national and international journals and books. In addition, he is editor of Diabetes and Metabolic Syndrome, associate editor of Journal of Diabetes USA, and European Journal of Clinical Nutrition UK. Dr. Mishra has received numerous awards and orations. He has been awarded the highest award of medicine in India, Dr. B.C. Roy Award, in 2006, and India's prestigious national honor Padma Shri 2007. He has received Outstanding Investigator Award from World India Diabetes Foundation in 2013. His current interests include research on liver fat, pancreatic fat, lean skeletal muscle mass, and vitamin D. He is author of the book Diabetes with Delight. Joining him is Dr. Mahipal S. Sachadev, an ophthalmologist and chairman of Center for Sight, a chain of eye hospitals in India. He is known as one of the pioneers of fecal-emulsification procedures in India. He is the co-author of a practical guide for fecal-emulsification, the first Indian book on the topic. The Government of India awarded him the 4th highest civilian honor of Padma Shri in 2007 for his contribution to Indian medicine. He is the chairman scientific committee of the Intraocular Implant and Refractive Society of India, or IIRSI. I now request my co-host Kishore to do the first round of questions. Thank you, sir. आगे बढ़ने से पहले हम एक झलक देखते हैं भारत स्वास्थ्य महोत्सव की। एडमिन प्लीज भारत स्वास्थ्य महोत्सव की झलक दिखाइए। नमस्कार, welcome to Bharat Swasth Mahotsav 2022. In sync with the Azadi Ka Amrit Mahotsav on the completion of 75 years of India's independence, BW Healthcare World and Heal Foundation have organized Bharat Swasth Mahotsav to celebrate the healthcare change makers in India since independence. यहाँ लिखा गया है पद्मा अवॉर्डी डॉक्टर। मैं मानता हूं कि पद्म सम्मान अवॉर्ड उसको मिलता है जो विजेता होते हैं, कंपटीशन में आगे निकलते हैं। जब इस अवॉर्ड की विभावना को मैंने देखा और जिस टाइम से अवॉर्ड देने के लिए निश्चित किया गया और उसके पीछे की विभावना ये थी कि देश में देश के लिए कुछ विशेष करे, विशेष कौशल्य हो, एक कौशल्य के आधार पर अपना कुछ विशेष कंट्रीब्यूशन दे, ऐसे लोगों को पद्मश्री पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा।
अवार्ड विजेता को मिलता है, सम्मान देश के लिए जीने वाले लोगों को मिलता है। दोस्तों, आप सब ऐसे लोग हैं जो अपने स्वयं को संकल्पबद्ध करके सिद्धि की ओर एक सन्निष्ठ प्रयास किया है। हौसलों के आगे कोई पर्दा नहीं होता, कड़े परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता, दिल में हो जज्बा कुछ कर दिखाने का तो जलते दिए को भी आंधियों का डर नहीं होता। इसी तरह अनेक तूफान और आंधियों को पार करते हुए आज मेरे सामने यहाँ सब ये प्रतिभाशाली व्यक्तिगण उपस्थित है। इस कार्यक्रम के आयोजक बिजनेस वर्ल्ड तथा हील फाउंडेशन को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जिन्होंने हमारे चिकित्सा क्षेत्र में ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों को एक साथ इस कार्यक्रम में आने का और उस कार्यक्रम में हमें उपस्थित होने का अवसर प्रदान किया है। मैं फिर एक बार, friends, I am delighted to participate in India's first Padma Doctors gathering in the Bharat Swasth Mahotsav to facilitate the healthcare change makers, Padma Doctors, for your outstanding contribution to healthcare landscape. थैंक यू एडमिन। आपको हम बता दें कि हमारा ये शो फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव चल रहा है और दुनिया भर में हजारों लोग इससे जुड़े हुए हैं और काफी क्वेरीज भी आ रहे हैं, काफी सवाल भी आ रहे हैं उनके। और ये संभव नहीं है कि हम सबको जोड़ सके वीडियो से, लेकिन उनके अगर कुछ सवाल होंगे तो हम आप तक पहुंचाएंगे। और सब इस बात से उत्साहित हैं कि पद्मा डॉक्टर्स, बड़े बड़े नामी डॉक्टर्स जिनसे मिलने का उनका ख्वाब होता है, वो आज उनके सामने है। हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है। मैं पहला सवाल डॉक्टर अनूप मिश्रा से पूछना चाहता हूँ। जी डॉक्टर साहब, आपका डायबिटीज के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है, ये कहने की बात नहीं है। आपको डॉक्टर BC राय अवार्ड मिला, डॉक्टर और पद्मश्री मिला, इसके अलावा भी कई अवार्ड मिले हैं। क्या आप संतुष्ट हैं? क्या आपको लगता है कि बहुत सब कुछ हो चुका है डायबिटीज में, 75 साल में हमने सब कुछ कर लिया है, या आपको लगता है कि नहीं अभी बहुत कुछ करना है? और अगर ऐसा लगता है तो क्या करना बाकी रह गया? ये आपने बहुत मुश्किल सवाल पूछा मुझसे। एक टाइम था जब 2014 से 15-16 जब मैं काफी इस बारे में संतुष्टि की तरफ चल रहा था, संतुष्ट नहीं था, संतुष्टि की तरफ चल रहा था, क्योंकि उस समय नया डायबिटीज कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च हुआ था इंडिया में, नेशनल डायबिटीज कंट्रोल प्रोग्राम, और उसके तहत बहुत तेजी से काम चल रहा था। हम सब लोग कर रहे थे, मैं भी इन्वॉल्व था इनिशियल उसके जो शुरुआत में रूपरेखा देने के लिए। तो उसके बाद 2 फेजेस में काम हुआ और 400 डिस्ट्रिक्ट में उसका कवरेज आया, लेकिन कुछ कारणवश उसमें तेजी खत्म हो गई। और ये चीज मुझको हमेशा लगती है कि हम हर चीज में एक मुकाम पर पहुंच रहे हैं। एक पोलियो को देखे या कोविड को देखे, सब में मुकाम पर पहुंच गए हैं हम, लेकिन डायबिटीज में कहीं इस समय मुकाम पर नहीं पहुंचे हैं। और इसी दौरान आपके फंक्शन में नहीं, किसी और फंक्शन में हेल्थ मिनिस्टर साहब से मैंने यही सवाल पूछा था। मैंने कहा था कि देखिए, जो भी हमने करा बहुत अच्छा करा, लेकिन हाथ में पकड़ में नहीं आई डायबिटीज और चलती चली जा रही है, और इसके लिए हमको एक कन्वेंशनल तौर से नहीं देखना है, नहीं सोचना है, हमको आउट ऑफ द बॉक्स हमको सोचना है। और इस बारे में मैंने डॉक्टर पॉल से भी बात करी इधर रिसेंटली, और मैं एक कोशिश कर रहा हूँ कि एक और
नए तरीके से इस पर विचार हो। तो आप इन मेरी बातों से समझ गए होंगे कि मैं संतुष्ट तो नहीं हूं और आगे के लिए चिंतित भी हूं। हम रोज जो देख रहे हैं ये कोई आसान बात नहीं है उसको टैकल करना, कि हम जो लोग को डायबिटीज जिस उम्र में हो रही थी वो तो हो ही रही है, और सब यंग उम्र के लोग हमारे क्लिनिक में चारों तरफ फैले हुए हैं और उनको कोई जीवन शैली में कोई भी रुचि नहीं है ठीक करने की, और तेजी से उनकी डायबिटीज बढ़ती जा रही है। तो इसको संभालने के लिए हमको नए सोच करनी होगी, हमारी सोच एक नए तरीके से आनी। डॉक्टर साहब, आपने हमारे दूसरे सवाल का भी जवाब दे दिया जो मैं पूछना चाह रहा था। आपने ये भी बता दिया कि डायबिटीज में हम बहुत कुछ कर रहे हैं और डायग्नोसिस के क्षेत्र में बहुत कुछ कर रहे हैं, ट्रीटमेंट के क्षेत्र में बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि इवोल्यूशन तो हो रहा है, लेकिन ये भी सच है कि डायबिटीज के रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है और कम उम्र के पेशेंट भी आ रहे हैं, ये लगातार हो रहा है। और कमी कहाँ रह गई है? हम तो धीरे धीरे दुनिया में, इंडिया जो है वर्ल्ड कैपिटल बन रहा है डायबिटीज का। अगर क्या करना चाहिए? क्या सरकारी नीतियों में कमी है? क्या आप चूंकि लैंसेट मैगजीन में भी लिखते रहे हैं, हम दुनिया में कहाँ खड़े हैं? दूसरे देशों, डेवलप्ड कंट्री की अपेक्षा हम कहाँ खड़े हैं? देखिए, एक तो ये आसान बीमारी नहीं है कंट्रोल करना। ये नहीं है कि आप घर घर पहुंच जाइए और ड्रॉप्स पोलियो के दे दीजिए और कल पोलियो खत्म हो जाएगा। ये बात तो है नहीं, इतना सरल तो है ही नहीं। ये पर्सनल, और ये हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब ने भी एक और उसमें कहा कि पर्सनल चॉइसेस हैं जो कि हमको बराबर इससे प्रॉब्लम होती रहती है। पर्सनल चॉइसेस सबको करनी चाहिए कि भाई कैसे खाना है, कैसे एक्सरसाइज करनी है। तो सिर्फ कहना कि हम एक्सरसाइज करना चाहिए और खाना अच्छा संतुलित आहार लेना चाहिए, ये इनफ नहीं है। ये आदमी के अंदर की रुचि और उसके सारे परिवार की रुचि, उसके सारे उस पर डिपेंड करता है कि क्या करना है। तो बहुत डिफिकल्ट ये डिजीज है, और ये नहीं कि गवर्नमेंट ने कोशिश नहीं करी। अगर आप उसके डॉक्यूमेंट देखिए तो नेशनल डायबिटीज कंट्रोल प्रोग्राम इन प्लेस है, जो एएनएम्स के जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ग्रास रूट वर्कर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो इन प्लेस हैं, फंड्स इन प्लेस हैं, लेकिन समहाउ कहीं डिस्कनेक्ट है कि हमने सब बना दिया और वो ग्रास रूट तक पहुंचा नहीं। एएनएम्स कह रही हैं हम लदे हुए हैं काम से। कई लोगों ने कहा कि हमको पता भी नहीं है कि हमको करना क्या है आगे जाकर। ये सब चीजें डिस्कनेक्ट है। इसके लिए मालवीय साहब, ऐसे नहीं होगा काम ये होगा कि एक कमीशन 10 साल के लिए बैठानी पड़ेगी। ये कोई 1 साल की बीमारी तो है नहीं कि आज आपने काम किया और कल ठीक हो गई। 1 साल के बाद हमने देख लिया कि सारा प्रेवलेंस भी ठीक हो गया और इंसिडेंस भी ठीक हो गया। 5 साल लगेंगे इसमें। इसके लिए रुचि तब तक 5 साल से जाते जाते गवर्नमेंट की भी खत्म हो जाती है, पॉलिसी मेकर्स चेंज हो जाते हैं और जो ग्रास रूट वर्कर्स हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। इसके लिए 10 साल की कमीशन विद डेडिकेटेड मिशन एंड डेडिकेटेड, बिल्कुल उसमें हमको यहाँ इस मुकाम पर पहुंचना है। 10 साल का आपको टाइम है। आप सब लोग 10 साल के लिए इसमें रहेंगे और ये अचीव करेंगे। ये पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, तभी काम चलेगा। ये 1-2 साल के काम में और एक कोई ऑफिशियल आया और दूसरा आया, इससे बात बनने वाली नहीं। डॉक्टर साहब, मैं आपका एक आर्टिकल पढ़ रहा था, आपने हाल ही में लिखा है, उसमें डायबिटीज की पुरानी दवाएं जो चल रही है उसकी तुलना जापानी कार से की है, और नई दवाइयों को आपने इटालियन लैम्बोर्गिनी बताया है। ये क्या है? इसका जरा विस्तार से बताइए, क्या कहना चाह रहे हैं? मैंने एक आम आदमी के जवान पर बात उस तरह से बात करने की कोशिश करी थी। एग्जैक्टली ये चीज नहीं है जो मैंने लिखा हुआ है कि भाई जो यूजुअल छोटी हमारी सुजुकी कार हैं वो पुरानी दवाइयां हैं और जो एक्सपेंसिव कार हैं वो नई दवाइयां हैं। एक तरह से 4 साल पहले ये बात सही थी, क्योंकि हमारी जो पुरानी दवाइयां जिसको सल्फोनाइल यूरिया या मेटफॉर्मिन कहते हैं वो 1-2 रुपए टैबलेट में मिल जाती हैं, बहुत ही सस्ती हैं, सब लोग अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उस समय 5 साल पहले की बात है कि उस समय के अगर नई दवाइयों की बात करें तो वो उनसे करीब 20 गुना ज्यादा एक्सपेंसिव थी।
और उस समय हमको पता भी नहीं था उसके बारे में, बहुत ज्यादा नहीं, शोध कार्य बहुत ज्यादा नहीं था। लेकिन जब जब शोध कार्य आने लगा और कुछ आउट ऑफ पेटेंट हो गई, तो इनकी दो चीजें हुई। एक तो उनके बारे में जानकारी हमको बहुत ज्यादा मिली और हमको पता चला कि ये तो पुरानी दवाइयों से 10 गुना ज्यादा फायदेमंद है हर तरीके से। और दूसरा, इनकी जो प्राइस है, जो कि 50 रुपए पर टैबलेट थी उस समय, अब इस समय जब आउट ऑफ पेटेंट हो गए हैं और 40 कंपनीज इंडिया में बना रही हैं, तो 10 रुपए से ज्यादा एक टैबलेट की नहीं है। तो जो कि विद इन, मैं ये नहीं कहूंगा कि भी बहुत अफोर्डेबल है, लेकिन एक मिडिल क्लास के अफोर्डेबिलिटी के रेंज में आ जाती है ये, और इस समय ज्यादा प्रिस्क्राइब करी जा रही हैं। उनके फायदे इतने ज्यादा हैं कि लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। आप बने रहिए हमारे साथ, हम फिर लौटेंगे आपके पास सेकेंड राउंड में। डॉक्टर महिपाल सचदेव जी, नमस्कार। नमस्कार। अगर मैं गलत नहीं हूं तो 20-25 साल पहले जब मैं नवभारत टाइम्स के लिए हेल्थ रिपोर्टिंग करता था, तो मैं आपसे मिला था और उस समय आपका फेको इमल्सिफिकेशन के लिए बड़ा नाम आया था जी। और तब से लेकर अब तक आई केयर में हम कहाँ हैं और क्या क्या हमने प्रगति की है? देखिए, आई केयर में मैं ये कहना चाहूंगा कि पिछले 3-4 डिकेड्स में जो प्रोग्रेस हुआ है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट हुआ है। दी प्रिसीजन विद विच जो आई केयर की डिलीवरी हो रही है या आउटकम्स हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा तरह से इम्प्रूव हो रहे हैं। जैसे कि कैटरेक्ट के बारे में आपने जिक्र किया, तो हमने 1991 में फेको इमल्सिफिकेशन स्टार्ट किया था और उस समय इसके ऊपर काफी मतलब लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे कि अर्ली विजुअल रिहैबिलिटेशन लोगों को क्यों चाहिए, लोगों को बाद में अगर 1 महीना घर में वेट भी करना पड़े तो क्यों चाहिए। क्योंकि पहले जब होता था तो व्यक्तियों को सैंड बैग में रखा जाता था, व्यक्ति सिर वगैरह नहीं हिला सकता था, उससे ये नो स्टिच कैटरेक्ट सर्जरी आई। तो नो स्टिच कैटरेक्ट सर्जरी जो फेको इमल्सिफिकेशन है उससे प्रॉम्प्ट क्विक रिकवरी विच इज अ वॉक इन वॉकआउट सर्जरी वो हो गई है और वो आज की तारीख में गोल्ड स्टैंडर्ड हो गया है। अब इसी को आगे बढ़ाते बढ़ाते जो पहले कैटरेक्ट जैसे दिस इज द मोस्ट कॉमनली परफॉर्म्ड सर्जरी, जो पहले रेस्टोरेटिव सर्जरी होता था जो कि विजन को रिस्टोर करने के लिए है, वो आज की तरह में एक रिफ्रैक्टिव सर्जरी बन गया है, जिसमें कि व्यक्ति अगर कोई चश्मा लगाता है ऑपरेशन से पहले और मोतिया हुआ है तो हमें एक कारण मिलता है या एक अवसर मिलता है रादर कि वो उसका चश्मा उतर जाए, कि उसमें हम इस प्रकार के नए इंट्राओकुलर लेंस जो इम्प्लांट कर रहे हैं, जो कि ट्राइफोकल लेंस है, टॉरिक लेंसेज है, जिससे कि व्यक्ति को चश्मे की जरूरत खत्म हो जाती है। और रोबोटिक सर्जरी आ गई है जिसको हम सेमी रोबोटिक या फेम्टो लेजर असिस्टेड कैटरेक्ट सर्जरी कहते हैं। तो ये तो एक महत्वपूर्ण एडवांसमेंट है जो कि कैटरेक्ट में हुआ है। उसके बाद चश्मा उतारने की विधि जिसको हम रिफ्रैक्टिव सर्जरी कहते हैं, यानी कि जो यंग लोग हैं जो चश्मा नहीं पहनना चाहते, वो भी अब स्टैंडर्ड ऑफ केयर हो गया है, जिसमें कि हम लेजर विजन करेक्शन को मतलब काफी ज्यादा लोगों में सेटिस्फैक्शन रेट है। जबकि स्टडीज की गई हैं कि जिन्होंने लेजर विजन करेक्शन कराया है उनसे पूछा जाए कि आपने ये सही किया कि नहीं किया, सही निर्णय था कि नहीं, तो 98% सेटिस्फैक्शन है। तीसरी जो चीज है उसमें हमारा काला मोतिया जो होता है उसके अंदर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुई है। नई ड्रग्स, जैसे अनूप अभी बात कर रहे थे, डॉक्टर अनूप, ग्लूकोमा की भी बहुत अच्छी नई मेडिसिन आई हैं जो कि महंगी थी मगर पेटेंट हटने के बाद अब वो सस्ती हैं, तो ग्लूकोमा का उपचार भी बेटर हो गया है। और एक जो सबसे बड़ी चीज है जो डायबिटीज की इन्होंने बात करी और रेटिनल डीजनरेशन की बात करी, जिसको एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन कहते हैं, जिसको कि आज से 20-30 साल पहले हम कहते थे कि कुछ नहीं कर सकते या लेजर करते थे रेटिना को बर्न करने के लिए। उसके लिए एंटी वेजेफ इंजेक्शन आए हैं जो कि ये जो प्रोग्रेस है इस डिजीज का इसको रोक सकते हैं। ओवरऑल प्लास्टिक सर्जरी आई कैंसर्स के अंदर आई सेव की जा सकती है। अब चश्मे भी ऐसे आ रहे हैं जिसमें कि मायोपिया कंट्रोल की बात हो रही है। मायोपिया क्योंकि बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो उसमें कई प्रकार के लेंसेज आ रहे हैं जिसको कि बच्चे पहने तो उससे मायोपिया की प्रोग्रेशन रुक सकती है। तो ओवरऑल अगर आप जनरली बात करें तो आई केयर के अंदर बहुत स्विफ्ट
और बहुत सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हुआ है। और इसका एक कारण ये है कि आंख की हर पार्ट को व्यक्ति किसी ना किसी तरह से देख सकता है, कोई लेंस लगा के, कोई 20D लेंस, 90D, 3 मिरर वगैरह, और उसमें फोकस्ड लेजर ट्रीटमेंट आ गया है। यानी कि कम से कम नहीं तो 12-14 प्रकार के अलग तरह के लेजर्स हैं जो कि लिड से शुरू होकर पीछे पर्दे तक जिसका उपयोग किया जाता है, जिससे कि लेजर के जरिए, कोलुमेटेड बीम के जरिए उसका बिल्कुल प्रिसाइज इलाज किया जा सकता है। तो आई जो माइक्रो सर्जरी है उसमें बहुत इंप्रूवमेंट हुई है, डायग्नोस्टिक्स में बहुत इंप्रूवमेंट हुई है। हम जैसे कैट स्कैन, MRI वगैरह की बात करते हैं, उसी तरह डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजीज और विधि जो है वो आई के अंदर बहुत बड़ी हैं। OCTs हैं आज की तारीख में, फ्लोरेसिन एंजियोग्राफी, एंजियो OCT वगैरह, कई प्रकार के UBM वगैरह, कई प्रकार के नए तरीके आ गए हैं जिससे कि डायग्नोसिस बेटर हुआ है। और क्योंकि डायग्नोसिस बेटर हुआ है, रीच फॉर ट्रीटमेंट बेटर हुई है, एंड ट्रीटमेंट बहुत बहुत तरह से इम्प्रूव हुआ है। व्हाट वी वर doing when we did MBBS or whatever, I think it was very primitive as compared to where we are. So there is a lot of improvement in eye care, and India is leading in these progressive adaptation of technology. कई FDA की trials अब इंडिया में हो रही हैं। ये इस चीज का गर्व है कि इंडियन ऑप्थेल्मोलॉजी जो है, जिसके लाइफ मेंबर्स वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हैं, that is one of the leading societies and one of the leading eye care practitioners are in India today as compared to the West. थैंक यू डॉक्टर, आप बने रहिए। सेकंड राउंड में हम आपके पास फिर लौटेंगे। इससे पहले कि मैं मिस्टर शंकर के पास जाऊं, मैं एक सवाल डॉक्टर मोहसिन अली वली से पूछना चाहता हूं। डॉक्टर साहब, over to you, Mr. Shankar. Thank you, Kishore. Dr. Mishra, Diabetes India 2021 expert panel has recommended that screening for diabetes should begin at the age of 25. A research paper titled Diabetes and Metabolic Syndrome, Clinical Research and Review, of which you are the lead author, said there is a common trend of increasing prevalence of diabetes in the younger age group and the last one decade in India. It was also found that almost 78% of them are either overweight or obese. And you said, we have already appealed to the Ministry of Health and Family Welfare and ICMR to lower the age of screening of diabetes to 25 years. What is the current status? Thank you, Shankar Saab, for asking this very, very important question. Remember, sometime back, a decade back, we lowered the limit for obesity in India by a single paper, which is one of the most cited paper in Indian diabetes and obesity scene since then. And that one step, that the BMI level or cutoff of obesity should not be 25 as internationally they dictated, it should be 23, actually was a major phenomenal step, because almost 8 crore people at that time came into ambit of diet and exercise immediately, that they should do more exercise, they should do more diet to prevent diabetes. Similarly, here, this, if it is ascertained by the health ministry, is going to be one phenomenal step. Why? Number one, we are seeing more and more people who are young and who have diabetes. Number two, the prime driver for diabetes in this age group is the overweight and obesity, as you have already stated. Currently, 30 years of screening, that age of 30 years for screening for diabetes was set in 2011 National Control Program guideline. So it has been 10 years now. And what has prompted us to write this and collect the data from all over the country was the American step. American Diabetic Association and other American association took the step that their initial cutoff for age was 40, ours was 30, should be lowered to 30 in certain subgroups like Indian population and other Asian subgroups.
So that 10 years, a decade down, was a major step by them. And we thought that given the current situation, from 30 to 25 should be an absolutely appropriate step. And if we do so, another 5 to 10 crore of people will be in ambit of early screening, early diagnosis, early benefit from treatment, whether it's a diet, exercise, or drugs, and so on. And these are the people who are in most productive years of life. As yet, I have not heard anything from the health ministry, but this is something which I'm planning to carry to the policy makers. I have, on that day at the conference, I briefly discussed with the health minister Saab. I have also discussed with Dr. Paul, and we might have a meeting soon where this would be suggested as one of the major steps. I hope it really happens very fast. Now, one more question is that Dr. Jyotidev Keshavdev, a diabetologist and co-author of your study from policymakers and masses, he said he said the prevalence of diabetes in Kerala is more than twice when compared to other states in India. The same trend is observed in the higher prevalence of diabetes among younger population in Kerala. Why is this so? Is it because the infrastructure is good and detection is early, or there is another inherent problem? Yes. So both the things. I suppose Kerala is a highly developed state, and there are plenty of very good diabetologists, and Jyotidev amongst one of the best in the country. And their number of public initiative they have taken on their own, besides government initiative. So certainly you are right, absolutely right, that there are early diagnosis, early screening, and so on. On the other hand, despite being the one of the most developed state, the lifestyle still remains bad. Despite they are very aware people. They are educated, they are aware, and so on. But their intake of carbohydrate remains high. Their intake of saturated fat like coconut oil remains high. Their coronary artery disease incidence remains high. So health indicators, wherever their own choices are being exercised, are still not good. So both the things together. But I can tell you the same story will be there if you do the current survey in Delhi also. It's equally bad probably. So Jyotidev has done well to highlight this problem there, but I think the other metros will have similar problems. Thank you. I'll move on to Dr. Mahipal Sachdev. What exactly is ultrasonic picoemulsification? Okay, so that is what Kushorji asked me the question. So actually there's a slight misnomer in it. Ultrasonic, you all understand, is ultrasound. It's the use of sound frequency to detect like you get an image, etc. So what we are doing, phaco stands for lens. That means the lens, the natural lens which is in the eye. Emulsification, we all know it's to make something small. You grind it into small pieces or you emulsify it. So what you are doing is that you are using a hollow titanium needle. So there is a hollow titanium needle which is oscillating back and forth, and also it is oscillating sidewards at the speed of sound. Okay, that means that the number of vibrations or the frequency at which it is moving is at the speed of sound. So therefore it is called as ultrasonic. So it is ultrasonic phacoemulsification, and it is this movement which breaks the cataract into small little pieces. So for a layman, phacoemulsification would mean that you are doing a no-stitch small incision. That means that the incision has been shrunk to about 2.2 millimeters, through which this needle goes within the eye, and it breaks the cataract or the lens into small pieces and simultaneously sucks it out. So you are therefore able to remove the cloudy lens. That means that the lens which has become opaque because of aging, because of say trauma, because of even metabolic reasons like diabetes, etc., that needs to be replaced. So you have to take out that lens and replace it by an artificial lens. So that is the modern day cataract surgery.
And as I told Kishorji, that now instead of breaking this cataract into small pieces with an ultrasonic needle, needle moving at the speed of sound, you are using also a femto laser. So that is called as FLACS, or femto laser assisted cataract surgery, where there is a laser which is firing for 1/4 of a second repetition rate. It goes and breaks up the cataract into small pieces. So this is the new technique, that you actually break the cataract into small pieces and remove it through a small tiny micro incision, which does not need any sutures, and where the visual rehabilitation is very, very fast. And now we have foldable intraocular lenses which can go through the same incision. That means a 2.2 millimeter incision, and go and open to its full size and come to lie at exactly the same place where the artificial lens has been removed. And in the optics of these intraocular lenses, now you have trifocal lenses where a person can have distance, intermediate and near vision, as also we have toric lenses and combination of trifocal with toric, wherein even the cylindrical power that a person is wearing in glasses can be taken care of. So there has been a composite improvement in the whole technique, and ultrasonic phacoemulsification still remains a gold standard for cataract surgery. Briefly, has artificial intelligence entered into the field of cataract surgery? Yes, artificial intelligence has entered into the field of cataract surgery into several things. The first is in the diagnosis of cataract. So now in artificial intelligence, you can actually maybe even go to a mall and take a picture. You can, and then by artificial intelligence, you will be able to grade the kind of opacity that the person is having. Okay. That means that whether the patient is having a grade 1, grade 2, grade 3, grade 4 cataract, the color of the cataract, and whether the surgery needs, whether a surgery is impending or is required. Similarly, then the images can tell you as to something which is called as a dysfunctional lens syndrome. A person may not have a totally opaque cataract, but the quality of vision has so gone down. So it is artificial intelligence which can simulate and see as to what is the quality degradation of the vision of an individual. And the third thing is also in the treatment, what I told you about was the femto laser assisted cataract. The laser can fire at different powers or energies, and depending upon artificial intelligence and the OCT image being taken, an image is taken before the laser is fired, and the use of artificial intelligence to actually tell us as to what kind of energy, what kind of settings, and that the machine automatically sets in the artificial intelligence. And apart from that, even in the lens power calculation, just now the lens power calculation is done outside the eye. That means before the surgery. Now you have artificial intelligence guided simulations which can happen at the time of surgery to get you nearer to the absolute correct power of the lens which is there. So there is a lot of optics related artificial intelligence work that is coming into cataract surgery to make it more precise, more repeatable, and more accurate as regards the outcome, and to choose the right lens for the right patient. Thank you very much. I think we have run short of time. Thank you very much, Dr. Anu Mishra and Dr. Sachdev, for your wonderful input. Before we move on to session 3, we have the session intro video.
Welcome to session 3. This show is live on Facebook and YouTube. As part of 75 years of independence evolution in the healthcare sector, we have with us eminent Dr. Mohsin Wali, cardiologist and a former honorary physician to the late Presidents R. Venkatraman, Shankar Daya Sharma, and serving physician to the late President Pranab Mukherjee. His first assignment as a physician to the President of India was with Sri R. Venkatraman at the age of 33, making him the youngest physician to serve an Indian president. He is the only physician to have served 3 presidents of India. The government of India awarded him the 4th highest civilian honor of Padma Shri in 2007 for his contribution to Indian medicine. Joining him is Dr. Balbir Singh, Chairman of Cardiology, PANMAX. He heads the cardiology and is responsible for development, quality, clinical governance, physician hiring, clinical governance, credentialing, research and training, including DNV program in cardiology across all Max hospitals. He joined Max Healthcare in November 2019 after a long and successful tenure as chairman of interventional cardiology and electrophysiology at Medanta. He has been widely recognized as he has received many national and international awards, including Padma Shri. My first question to Dr. Wali is that there is hardly any focus on preventive cardiology. It's all on curative. Why is this so? What are the benefits of preventive cardiology? Thank you, Mr. Shankar. I hope I am audible. Yes, you're audible, sir. And I'm very pleased to join Balbir Singh, sir, and he has a very different experience in the field of cardiology. But as a generalist, as a physician having experience of over 50 years, I can say that we ourselves neglect our heart. The government has brought many schemes over the time, but still people are not serious about it. So there are many surveys around the world. And before going to that, I would first like to thank the business world and your team, especially to people present here, that we are talking this very important topic. The leadership of your boss and Sudeep ji and Heal Foundation is very important in this direction. That's why I brought this in. And without your cooperation, we cannot achieve the goals. You know, ICMR in India, in 2013, conducted a very large study in younger people and people about 20 years of age. And it found that 45% of people were physically inactive. And now we have discovered that even people who are going to gyms, gymnasia, their focus is not on cardiovascular health or cardio exercises simply, but their focus is mainly towards the bodybuilding. So the very aim of cardiac health is jeopardized. I often explain to my patients that heart is such a peculiar organ in the body which starts beating when we are in the womb of the mother, and till the last breath of the life, it keeps beating. It doesn't go on vacation. It doesn't go on leave. And it keeps beating even when we are asleep. All other organs' activity gets different. So we have to really focus our attention to the cardiovascular health. And when we say cardiovascular health, we also include the rhythm disorders for which Dr. Balbir Singh is pioneer. We also focus on hypertension, that is the vascular disease. And we also focus on vascular-related diseases, majority of which is strokes. And that strokes, as we were hearing, that disability at a very productive years is the biggest contributors to disability in the productive years due to the cardiovascular disease. Apart from that, sir, despite different programs, despite preventive educations, we have hypertension incidence
48.4% responsible. Diabetes, we were talking, is responsible for majority of the cardiovascular diseases. Our obesity, which is associated with diabetes, psychological stress. These days, I'm finding 7 out of 10 patients are under stress. Poor fruit and vegetable consumption, alcohol, smoking, all these factors, dyslipidemia, typical to Indians with high triglycerides and high lipoprotein A levels. These all, summarizing your answer, is there are more causes than the steps taken for the prevention. So we are lagging behind in cardiovascular disease prevention, and somehow this is taking a biggest toll and most important cause, the largest mortality. And unfortunately, in India, this disease sets in 10 years earlier than the international standards. So we are somehow heading towards a young cardiovascular disease syndrome with metabolic syndrome coupled with diabetes, hypertension, stress, smoking, alcohol, and so on. So these are the various causes in India. We can say that depending on the data and these studies, we are lagging behind. It's like a race. The disease is running faster than the prevention taken and preventive steps taken and the convincing of the patients. I get younger patients. Yesterday, I got in the evening a patient who had no child for 4 years after marriage. And he was himself saying, "Sir, I am under stress. I drink alcohol and now I have developed diabetes." I did his ECG, there were changes. He was having hypertension. So this is a syndrome complex which has many components. So we have to decipher them holistically rather individually. That's what my submission is. So. Dr. Wali, of late, especially post-COVID, we hear of people suddenly falling dead. Now, what is the reason behind that? So COVID, including me, has involved many patients, many people, and we are seeing younger deaths. COVID has been now known not as a viral disease, but is a inflammatory disease which has involved the cardiovascular system, the endothelial health of the inner lining of the vessels, and also the vessels of the heart. And because of that, it has led to damage to the lungs. Apart, cardiovascular health has been very badly affected. People have developed, apart from diabetes, coronary artery disease. People have developed myocardial infarctions, embolic phenomena, sudden deaths. We have heard so many cases of sudden deaths in executives, fit people who have died suddenly, who are regular walkers or regularly going to gyms. So COVID in a very bad way has affected cardiovascular health, and we have to keep this also. You are very rightly asked. Thank you for asking this, that because of both type of manifestations, procoagulant and anticoagulant manifestations, that is, it clots, also it bleeds. So both type of things have been seen in COVID, bleeding and clotting, and a number of conditions similarly in the lungs, in the bodies, in the extremity. In fact, the first case I saw of COVID, when COVID was not known around, was a gangrene patient who came to us with very different type of findings, raised markers as in myocardial infarction, and we were, it took time for us to locate that this was probably COVID. Thank you. I'll come back to the second round of questions. Now I'll move on to Dr. Balbir Singh. Dr. Singh, is unexplained and sudden fainting due to arrhythmias? Right. So, first of all, thank you very much for this kind invitation. It's a great honor to be here. And with Professor Wali on the screen, I think it's even more amazing to be here. So if we talk of fainting due to arrhythmia, we call this as syncope. So syncope, by definition, is a transient loss of consciousness where a patient or anybody, I won't say just a patient, any human being, maybe sitting, maybe standing, just feels as if things have turned around and there's a blackout and then just falls or slumps.
And this slump is because of loss of muscular tone. So the muscle tone is not able to make the person stand. He falls down, and the passerbys or relatives are able to understand that something has happened, come to his rescue. Sometimes this rescue works, sometimes it doesn't work. So the person doesn't know what happened. When you ask him, they just say that something happened and they just couldn't see anything, and then they were down on the ground. So that is syncope. So syncope can be a simple syncope, which happens in young children. It could be a very dangerous arrhythmia because it may tell you that this person is very high risk for sudden death and you must treat him. Because if anybody doesn't come out of that syncope, that is sudden death. So this syncope business is very, very important. All patients who have syncope, irrespective of the age, should be investigated and treated, because treatment is possible and they can be given very good beneficial treatment. But understanding that some dangerous arrhythmias can cause syncope, which can lead to a death of a person, is one of the most important causes of sudden death. And as we have been just talking, that sudden death in India or worldwide is the commonest cause how the cardiac patients die. So we have all heard stories that the patient went home, had dinner, was chatting with the family, and never woke up in the morning. These stories are all sudden death related to arrhythmia and some malignant arrhythmias which cause death. So this is what syncope or transient loss of consciousness actually means. Can electrophysiology predict the risk of sudden cardiac death, and when would you prescribe such a test? So we have a problem hearing you, Dr. Singh. I think, Kishore, you can move on to Dr. Wali and then come back to Dr. Singh. Thank you, sir. Dr. Wali. Yes. सर, आपने 3 प्रेसिडेंट्स के साथ काम किया है, सरकार को नजदीक से देखा है, हेल्थ पॉलिसीज और स्कीम्स बनते बिगड़ते देखी है। अभी जो हमारा हेल्थ केयर पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट के और जो भी स्कीम्स चल रहे हैं, क्या उसमें कुछ मिसिंग पाते हैं या सब कुछ ठीक चल रहा है? देखिए, भारत इतना विशाल देश है और इतना डिफरेंट पार्ट्स इसके डिफरेंट हैं, तो इसमें एक बिंदु पर आकर एक राय बनाना बहुत मुश्किल है। देखिए, जहाँ तक हमारी स्वास्थ्य सेवाओं का सवाल है, मैं बिल्कुल सच्ची बात बताता हूँ। हम लोगों के समय में वो लोग डॉक्टर बनते थे जिनमें सेवा भाव होता था। मैं सिस्टम से पहले डॉक्टरों की बात कर रहा हूँ। और सौभाग्यवश हमको ऐसे गुरु मिले, ऐसे टीचर्स मिले जिन्होंने हमें अच्छी शिक्षा और अच्छे बेडसाइड मैनर्स तो दिए ही दिए, उन्होंने हमें अच्छे संस्कार भी दिए। तो उससे हमने बहुत अच्छी मानवता की सेवा की और हमारे डॉक्टर्स जो बाहर गए उन्होंने बहुत अच्छे उदाहरण प्रस्तुत किए और आज भी कर रहे हैं। गांव-गांव में स्वास्थ्य सेवाएं थी, रही और हैं, लेकिन जनसंख्या के विस्फोट से कहीं ना कहीं जो तरक्की हमने की है वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट होती चली गई और डॉक्टरों की रुचि गांव में जाने में कम हो गई, तो स्वास्थ्य सेवाओं में झटके आते गए। पिछले दिनों जब श्री जेपी नड्डा जी मंत्री थे, उन्होंने हेल्थ पॉलिसी को रिवाइज किया 17 साल के बाद और ये पाया कि हमको प्राइमरी हेल्थ केयर को स्ट्रेंथन करना है। बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बड़े शहरों में, महानगरों में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये सुविधा गांवों तक नहीं पहुंचती है। न गांव का पेशेंट उन हॉस्पिटल्स में ज़्यादातर आने की हिम्मत करता है। थैंक्स टू प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना एंड डिजिटल आयुष्मान मिशन, so that some poor patients are now going to these big hospitals and they are getting the good care. आपके प्रश्न के उत्तर में मैं ये कहूँगा कि हमारे महान देश में आज की तारीख में अगर हम
दुनिया से कंपेयर करें तो फ्री चिकित्सा और अच्छी चिकित्सा जैसी अब भी उपलब्ध है वो किसी देश से कंपेरेबल नहीं है, बहुत अच्छी है और इसको हमको और मजबूत बनाना है। और अब बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के बाहर मैं बोर्ड देखता हूँ कि इस अस्पताल को सरकारी जमीन आवंटित की गई है रियायती दरों पर, लिहाजा इस अस्पताल में इलाज गरीब लोगों का फ्री होता है, आप आइए और इलाज करवाइए। मैं जिस हॉस्पिटल में गंगाराम हॉस्पिटल में काम करता हूं उसमें सुबह को इतनी बड़ी जनरल ओपीडी होती है जो फ्री होती है, मुझे देखकर बड़ा गर्व होता है कि ऐसे अस्पताल में जहां हर चीज के पैसे देने पड़ते हैं इन हजारों गरीबों का इलाज रोज फ्री हो रहा है, जिसकी हम बात कहीं नहीं करते मीडिया में, और वो लाभान्वित हो रहे हैं, फायदेमंद हो रहे हैं और दे आर गेटिंग बेनिफिटेड, जिसको हमको ऐसे कहना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं हमको आगे बढ़ना है और प्राइमरी हेल्थ केयर को हमें मजबूत करना है, जिससे घर घर तक, जैसे हमने अभियान चलाया है घर घर तिरंगा, इसको मैंने जोड़ा था मन मन तिरंगा, तो हमारे मन में ये भाव हो कि हमें गरीब की सेवा करनी है और घर घर में हमारे एक अच्छी मेडिकल सुविधा जा सके। मैं आपसे फिर कहूँगा, हमारे वो बुजुर्ग जो गाँवों में रहते हैं जिनके बच्चे पहले साइकिल चलाते थे अब वो गाड़ियों में घूम रहे हैं, तो हम खुद ही बीमारियों को इनवाइट कर रहे हैं बाय लैक ऑफ एक्सरसाइज, बाय रॉन्ग काइंड ऑफ डाइट, बाय रॉन्ग काइंड ऑफ आवर डे टू डे लाइफ स्टाइल। सो हमारी भी इसमें उतनी ही गलती है जितनी हम दूसरी तरफ देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ, तो हमको खुद भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास करना है और सरकार अपना काम कर रही है। धीरे धीरे सरकार के अंदर ऐसी मैं बातें देख रहा हूँ जिससे वो ग्रामीण स्वास्थ्य चिकित्सा पर ज़्यादा ध्यान दे रही है, बजट के बढ़ाने पर ज़्यादा ध्यान दे रही है और गरीब की सेवा की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रही है, थैंक्स टू वेरियस स्कीम ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर प्रेजेंट टाइम में, जिससे हम गर्व के साथ ये कह रहे हैं कि हमारे देश का एक आम नागरिक स्वास्थ्य सेवाओं से, मैं सही बात कह रहा हूँ, ये वंचित नहीं है और बहुत अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं, आप दिल्ली के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल की बात करें या ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट की बात करें, इन अस्पतालों में भी गरीबों का इलाज मुफ्त हो रहा है और बहुत ज़्यादा तादाद में हो रहा है, जो वर्ल्ड के स्टैंडर्ड से कहीं बहुत हाई है। तो मैं गर्व के साथ ये कहता हूँ कि मेरे देश के डॉक्टर सबसे अच्छे हैं वर्ल्ड में और मेरे देश के मरीज अच्छी सेवाएं पा रहे हैं। अपवाद होते हैं, हर जगह होते हैं, लेकिन उनको छोड़कर हमारे देश की स्वास्थ्य चिकित्सा अब बहुत अच्छे आयाम के साथ बहुत अच्छे प्रगति के पथ पर बढ़ रही है और मुझे इस पे ये कहते हुए गर्व है कि वी आर बेस्ट इन द वर्ल्ड बट शॉर्ट कमिंग्स अपार्ट। आपने बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब। एक गरीब आदमी, एक गरीब मरीज जो ख्वाब में भी नहीं सोच सकता है कि वो मैक्स और सर गंगाराम हॉस्पिटल में इलाज कराने जाएं और सर हॉस्पिटल में उनके लिए फ्री ओपीडी की व्यवस्था है, ये बहुत अच्छी बात है। एक सवाल मेरा आपसे ये भी था कि आजकल देखा गया एक ट्रेंड है कि कम उम्र में लोग हार्ट अटैक के शिकार हो रहे हैं। बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जो जिम करते समय ही गिर जा रहे हैं, तो ये अचानक इसमें बढ़ोतरी हुई है, क्या वजह है इसके? देखिए, हम अभी जो लाइफ स्टाइल की बात कर रहे थे वही कारण इसमें होता है और ये अब हमारी जो वेस्टर्न किताबें हैं उसमें भी ये चीज आ गई है कि यंग के लिए स्पेशल हार्ट डिजीज यानी कोरोनरी आर्टरी डिजीज ऑफ यंग, तो हमें भी पढ़ाया गया था उस वक्त, लेकिन तब इतना ज्यादा नहीं होती थी। इसमें यहाँ मैं फिर से लाइफ स्टाइल को दोष दूंगा। उन लोगों में कुछ ऐसी भी बीमारियां होती हैं जिसमें नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल ब्लड प्रेशर, नॉर्मल वजन के साथ कुछ हार्ट की रगों की बीमारियां होती हैं और कुछ एरिथमियाज जिसकी बात डॉक्टर बलबीर सिंह कर रहे थे वो होती हैं, जिसकी वजह से उनमें दिल के दौरे सडन पड़ सकते हैं। और कॉन्ट्रासेप्टिव यूज और कोरोनरी आर्टरी की एबनॉर्मेलिटीज, उनको अगर हम एक तरफ छोड़ दें, बड़े प्रतिशत की तरफ जाएं, तो वो बड़ा प्रतिशत में लाइफ स्टाइल ही रिस्पॉन्सिबल होता है। हम इसको आसान तरीके से इसलिए एक तरह से कह सकते हैं कि आजकल के बच्चों में स्कूल गोइंग एज से ही हम जब मिडिल क्लास और अपर क्लास की बात करते हैं, जंक फूड का प्रचलन बढ़ रहा है और एक गरीब के फूड में भी वो भी डेफिशिएंट है। मैं ये कहूँगा यहाँ पे
उसमें भी पूरे वो विटामिन और मिनरल्स और प्रोटीन्स नहीं है। तो एज ए होल हमारी डाइट इसके लिए बहुत बड़ी तादाद में रिस्पॉन्सिबल है। और दूसरा जिसकी मैंने अभी पहले बात की थी, लैक ऑफ एक्सरसाइज, तो ये बहुत बड़ा एक 2 चेंज आए हैं जिसकी वजह से यंग कोरोनरी आर्टरी डिजीज यानी कोरोनरी आर्टरी डिजीज में इजाफा हुआ है। और जहां तक हम प्रिवेंटिव मेजर्स की बात करते हैं, उसमें मैं यही कहता हूं लोगों से कि इट इज नोन टू ऑल बट फॉलोड बाय नन। जानते सब हैं, हमें वजन कम करना है, शुगर ठीक रखनी है, और हमें कोलेस्ट्रॉल ठीक रखना है, ब्लड प्रेशर मेंटेन करना है, और हमें स्ट्रेस से बचना है, स्मोकिंग नहीं करनी है, सब जानते हैं। लेकिन परसों मेरा एक पेशेंट मुझे दिखा के जाता है और गाड़ी में बैठ के वो 6 पराठे खाता है, उसके बाद वो स्मोक करता है, डिस्पाइट मैंने रेड कलर की इंक से उसके प्रेस्क्रिप्शन पे लिखा हुआ है स्टॉप स्मोकिंग, नो स्मोकिंग, और उसके बाद वो वापस आता है 15-20 मिनट के बाद और उसके ईसीजी में चेंजेस आती है एक्यूट हार्ट अटैक की, और फिर वो हॉस्पिटल जाता है, घर नहीं जाता है। तो ये जो हमारी प्रवृत्ति है छुपकर स्मोकिंग करने की और ये सब गलत खाने की और व्यायाम न करने की, ये इसके लिए बहुत बड़ी तादाद में रिस्पॉन्सिबल है। और कुछ जेनेटिक फैक्टर्स को छोड़ दीजिए या कुछ आकस्मिक चीज़ों को छोड़ दीजिए जिसमें कोरोनरी आर्टरी स्पैज़म में चली जाती हैं। मेरा एक यंग पेशेंट था कई साल पहले, वो नीचे कुएं में गया, गांव का पेशेंट था, और कुएं में से उसका पंप खराब हो गया था, अकेला वो कुएं में से लाया, क्योंकि एक ही सीढ़ी थी कुएं में, जैसे होती है लोहे की सीढ़ियां बनी हुई। तो वो जब ऊपर आया तो वो फेंट हुआ, कोलैप्स हुआ, छाती में दर्द हुआ, और उसकी नॉर्मल कोरोनरी एंजियोग्राम आई, लेकिन उसको फ्रैंक हार्ट अटैक आया। उससे पहले हमने देखा कि उसको फ्रैंक हार्ट अटैक आया। तो ये जरूरी नहीं है कि कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्शन होना 100%, इसके लिए पहली क्राइटेरिया है कि हमको हार्ट अटैक जब आएगा जब हमें कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्शन होगा या एथेरोस्क्लेरोसिस होगी। नॉन एथेरोस्क्लेरोटिक कॉजेज भी होते हैं इसके, जिसके कई रीजंस होते हैं जो हमको जानने जरूरी है, मरीज को नहीं, और हम जानते हैं और ये ध्यान में रखते हैं जब हम किसी यंग कोरोनरी आर्टरी डिजीज के पेशेंट को अटेंड करते हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब, शुक्रिया। मेरा अगला सवाल डॉक्टर बलबीर सिंह जी से। डॉक्टर साहब, मैं आपसे अपना कोई सवाल पूछूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा ये शो दुनिया भर में लाइव देखा जा रहा है यूट्यूब और फेसबुक पर, और काफी सवाल आ रहे हैं। समय की कमी के कारण हम सारे सवाल तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन डॉक्टर बलबीर सिंह से एक सवाल पूछा है लखनऊ से श्री परवेज अहमद ने। उन्होंने पूछा है कि डॉक्टर साहब, हार्ट अटैक और हार्ट फेल्योर में क्या अंतर है? ये आम आदमी की भाषा में कैसे समझा जा सकता है? तो ये बहुत अच्छा सवाल पूछा उन्होंने, क्योंकि बहुत लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर क्या होता है। तो अगर हम देखें, हार्ट अटैक होता है जब आर्टरी जो हार्ट को ब्लड सप्लाई दे रही है वो बंद हो जाती है और आदमी को चेस्ट पेन होता है, स्वेटिंग होती है और वो उसको हॉस्पिटल रश करना पड़ता है। हार्ट फेलियर होता है जब पहले हार्ट अटैक हुआ हो या पहले हार्ट पंपिंग कम हो, हार्ट वीक हो, तो हार्ट पूरी बॉडी को इतना ब्लड नहीं दे पाता है कि वो काम करे पूरी बॉडी, तो शरीर वीक होता है, पैरों में स्वेलिंग आती है, सांस फूलता है, तो ये हार्ट फेलियर के सिम्टम है। हार्ट अटैक में चेस्ट पेन कॉमनेस्ट सिम्टम है। चेस्ट पेन ना हो, कई बार ऐसा लगता है कि छाती पे भारीपन है, गले में कुछ भारीपन जा रहा है, दोनों हाथों में कुछ पेन हो रहा है, ये हार्ट अटैक है। तो हार्ट अटैक के पेशेंट को इमीडिएटली हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए, उसी से वो बचाव हो सकता है। अगर एक मरीज 60 मिनट के अंदर अंदर, हम जो गोल्डन आवर कहते हैं, 60 मिनट हैं, हाइपरटेंसिव हैं, पूरे अपने टेस्ट करें ताकि हम वो स्टेज हार्ट फेलियर की मत पहुंचे, क्योंकि वो हार्ट फेलियर की स्टेज बहुत खतरनाक स्टेज है एक पेशेंट के लिए। डॉक्टर साहब, आजादी के 75 साल में हमने कार्डियोलॉजी पर तो बहुत काम किया है और बहुत हमने इसमें बहुत हमने इवोल्यूशन हुआ, बहुत विकास भी हुआ है इसमें। लेकिन अगर वेस्ट की तुलना करें या डेवलप्ड कंट्री की तुलना करें तो हम कहाँ खड़े हैं? तो मैं सोचता हूं कि अगर हम वेस्ट की तुलना करें तो हमने बहुत अच्छा किया है पिछले 75 साल में। हमारा जो आज के डॉक्टर्स हैं, यूएस में भी इंडियन डॉक्टर्स बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, उनकी रिसर्च से ही बहुत दुनिया फायदा उठा रही है। इंडिया में बहुत अच्छे लेवल पे रिसर्च हुई, प्रिवेंशन में, इंटरवेंशन में, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में, तो हमारी अब इज्जत पूरी दुनिया में बहुत है। जो 75 साल पहले शायद हमने शुरू कर रहे थे, एक नया देश बनना था, बिल्कुल स्क्रैच से, ग्रास रूट लेवल से शुरू हुआ था, और आज जहाँ है
बहुत डिफरेंस है। तो क्या हम कहाँ लैग करते हैं? तो मैंने ये नहीं कहूँगा कि हम बहुत बिल्कुल ऊंचाई पे पहुंच गए हैं और हमारा और कोई आगे बढ़ने का स्कोप नहीं है। बहुत स्कोप है। कहाँ हम लैग करते हैं कि हमारा इंजीनियस प्रोडक्शन नहीं है। तो कैथेटर्स वगैरह जो हम सामान यूज करते हैं पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए, जनरली इंपोर्टेड होता है और कॉस्टली होता है, तो कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। तो जैसे आपने देखा, ये हमारी सरकार ने कुछ बहुत मेजर स्टेप्स लिए कार्डियोलॉजी में। स्टेंट की प्राइसिंग कैप की, पहली बार दुनिया में किसी स्टेंट की प्राइस कैप हुई। जो स्टेंट 1 लाख या 1.25 लाख का होता था, 30,000 पे कैप हुआ। कई मरीजों को बहुत फायदा हुआ। फिर आयुष्मान स्कीम्स में अब हम कई मरीजों को ट्रीट कर सकते हैं बहुत कम कॉस्ट में। तो इन स्टेप्स से हम आगे बढ़ेंगे। ये स्टेप्स एट द मोमेंट यही है कि हमारे इंडिजिनस प्रोडक्ट्स नहीं है। अगर इंडिजिनस प्रोडक्ट्स हैं तो वो भी वहां से सामान लाया गया तो कॉस्टली बहुत हो जाते हैं। अगर हमारे अपने प्रोडक्ट्स हों और हमारी अपनी रिसर्च यूज की जाए इन प्रोडक्ट्स बनाने में, तो शायद हम बहुत ज्यादा मरीजों को फायदा दे पाएंगे जो आज हम नहीं दे पाते हैं। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जहां हम अभी पीछे हैं, लेकिन जो प्रोग्रेस इंडिया में हुई है बहुत अच्छा मानना पड़ेगा। क्योंकि मेरे जैसे आदमी जो अपने कॉलेज लाइफ और आज की डेट में अगर कंपेयर करें तो जमीन आसमान का फर्क है। पहले हम जाते थे अमेरिका सीखने के लिए, कुछ मैं 15-20 साल की बात करता हूँ, हमारी आंखें खुली की खुली रह जाती थी कि हम कहाँ हैं और वो कहाँ हैं। अब हम जाते हैं, हमें कोई ज्यादा फर्क नहीं लगता। उनकी कैथ लैब्स में जाते हैं, उनके हॉस्पिटल में जाते हैं, हमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं लगता कि जैसे वो ट्रीट कर रहे हैं और जैसे हम ट्रीट कर रहे हैं अपने मरीजों को। बट हमने कुछ कमियां बताई जो हम सोचते हैं कि सरकार बहुत मेहनत कर रही है उसके ऊपर, और हम अगले कुछ 5 साल में काफी आगे निकल जाएंगे इन चीजों में भी। थैंक यू डॉक्टर साहब, सुनकर बहुत अच्छा लगता है कि हम अमेरिका के बराबर आ गए हेल्थ केयर सेक्टर में, और कई मामले में हो सकता है कि हम उन्हें पीछे भी छोड़ दें। बहुत बहुत शुक्रिया। मिस्टर शंकर, आपसे कुछ पूछना चाह रहे थे, आपका लिंक कट गया था। ओवर टू यू मिस्टर शंकर। Dr. Singh, I just asked you a question regarding these people who have whether EP can predict a heart event. So first of all, what is electrophysiology study? So EP study means electrophysiology study. So electrophysiology study means studying the heart. So God has made a beautiful organ, which is the heart. Heart has blood vessels, which are like water pipes. It has electrical system better than any electrician or anybody electrical engineer can make. A fantastic system which works day in, day out, cannot stop at all your life. It is there 24 hours a day. So how does it work? It has a pacemaker, which is a cell, which is like a generator you have at home, or any generator an engineer makes. A very small, minuscule. You can see only that pacemaker on a microscope. No human being or no research can make that pacemaker. It cannot be copied. With that pacemaker, God has made some electrical wires, and these electrical wires take the current down into the ventricle. When the current comes, the heart pumps. So it is like a pump at your home. It needs a generator, and then the pump pumps the water into the pipes. It is exactly what the heart does. In a miniature form, it does this continuously. But this electrical system is prone to problems. It is prone to problems which could be a genetic problems, or it could happen later on in life after heart attacks or many other problems that may happen. So this electrical system gets at trouble. So testing that electrical system by electrophysiological testing helps us to understand what is the mechanism of these abnormalities. And fortunately for us, electrophysiology has evolved into a great field, and we can actually cure many patients by ablation or process of using cryo or radiofrequency ablation and cure these patients. And this cure rate is going up every day. So if somebody asks me, in medicine we don't talk of cures, we talk of treatment. Arrhythmias and electrophysiology studies offer a cure to the patient, that he's cured for his. I think you're mute, Dr. Singh. As we go in time, every day we get some new things happening in electrophysiology, and patients are getting better. So as a cardiologist, we need 3 things to the patient. We need to give him a better quality of life. We have to stop him coming to the hospital recurrent, because we don't want to have a patient coming back to the hospital again and again, and improve his longevity. And electrophysiology and ablations and treatment with devices has taken a long way, and we are looking forward to giving this to the patients.
Thank you very much, Dr. Singh, and also Dr. Wali. I think it was a wonderful session, both having an insight into cardiology and the future of cardiology in India. Thank you very much. But wonderful to hear that India is catching up, and also India is in the forefront of a lot of research in this field. Thank you very much. We now move on to the next session, the fourth session. Session 4 is on acupuncture, the evergreen panacea for healing. And we have with us Dr. Raman Kapoor, a renowned medical acupuncturist, widely recognized for developing the practice of scientific acupuncture in India and curing many patients suffering from intractable diseases. He is the recipient of the first Padma Shri in Medical Acupuncture Award by Honorable President of India, Srimati Pratibha Patil, in 2008. Joining him is veteran Padma Shri awardee Dr. Chandrakant S. Pandav, the former professor and head of Department Center for Community Medicine at the All India Institute of Medical Sciences, New Delhi. He is the founder member and regional coordinator for South Asia of International Council for Control of Iodine Deficiency Disorder since 1985. He was former president of Indian Association for Preventive and Social Medicine. He has been working in the areas of iodine deficiency disorders, Dr. Chandrakant S. Pandav, Health System Research, the former professor Health Economics, Department Center for Community Medicine at the All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, Private Partnership. He is the founder member and Rishu. He is the co-editor of 100 odd books on health sciences and author of about 650 papers and published in various national and international journals. Apart from all that, Dr. Chandrakant Pandav is a close friend of ours. So over to you, Kishore, for your first round of questions. थैंक यू सर, थैंक यू। मेरा पहला सवाल डॉक्टर रमन कपूर से। डॉक्टर साहब, इसमें कोई शक नहीं कि एक्यूपंक्चर बहुत ही इफेक्टिव पद्धति है, लेकिन दुर्भाग्य से ये हमारे देश में इतना पॉपुलर क्यों नहीं है, खास करके यंग जनरेशन में? क्या जागरूकता की कमी है या क्या हमारी पॉलिसी में कोई कमी है? क्या वजह है? किशोर जी, पहले बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए। यहाँ पे एक बहुत बढ़िया फोरम है आपका हील फाउंडेशन का, एंड ऑल्सो वेलकम टू ऑल माय Padma colleagues with whom we interacted just a few days back only physically also at the function you had organized at the Meridian. And now as I come to your question, किशोर जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज समझने वाली इसमें ये है कि आज एक्यूपंक्चर जो है वो एक ऐसी विद्या है जो कि वर्ल्ड वाइड बड़ी पॉपुलर है। यूरोप में, सारे यूरोप में देखिए, यूएस में देखिए, यूके में देखिए, सब जगह पे मैं ट्रैवल करता हूँ सीखने के लिए फर्दर एक्यूपंक्चर को। मुझे 40 साल खुद हो गए हैं। आई एम ए मेडिकल डॉक्टर, आई एम एन एमबीबीएस डॉक्टर, और उसके बाद मैंने ये साइंस को जो है टेकअप करा है। और आज जो है पिछले तकरीबन 20 साल से हम एक्यूपंक्चर टीच भी करते हैं, पर क्योंकि जो हमारी पॉलिसी तक यही है कि जो क्वालिफाइड मेडिकल डॉक्टर्स हैं वही एक्यूपंक्चर को सीख सकते हैं, चाहे वो एलोपैथ हो, चाहे होम्योपैथ हो, चाहे आयुर्वेदिक के डॉक्टर हो, चाहे फिजियोथेरेपिस्ट हो। तो ये सब जो क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स हैं इन्हीं को हम एक्यूपंक्चर सिखाते हैं। अब इस पॉलिसी में एक बहुत बड़ा चेंज आना जरूरी था, और वो चेंज ये जरूरी था कि इसको हम, जैसे इंटरनेशनल कम्युनिटी में है, इसको हम एक इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर के फॉर्म में इंडिया में लेके आए। और इसमें सबसे बड़ा और बढ़िया स्टेप जो गवर्नमेंट ने, जिसके लिए मैं इतने सालों से जद्दोजहद कर रहा हूँ, ये 2019 में आया जबकि नड्डा जी हमारे हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने, और क्योंकि उनका पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा एक्यूपंक्चर के साथ और उनको काफी बेनिफिट नजर आया इस ट्रीटमेंट से, तो उन्होंने इस चीज को बहुत पर्सनल लेवल पे लेके और एक साइंटिफिक लेवल पे देके देखा कि इस सिस्टम को हमें एक अपने हेल्थ केयर सिस्टम का पार्ट बनाना चाहिए। और ये प्राइम मिनिस्टर की भी हमारे ड्रीम है कि इंटीग्रेटिव हेल्थ केयर इज द ओनली आंसर। आई थिंक मेरे वेस्टर्न कोलीग्स जो इस डायस पे बैठे हुए हैं वो भी एग्री करेंगे कि सारी बीमारियों का इलाज हमारे पास वेस्टर्न मेडिसिन में नहीं है। कई ऐसी बीमारियां हैं जो ऐसी क्रॉनिक बीमारियां होती हैं, जैसे कि लो बैक पेन है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, माइग्रेन है, एस्थमा है, एलर्जी की प्रॉब्लम है। अब रिसेंटली देखिए आप, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस इतने आ रहे हैं, स्ट्रेस बिकॉज ऑफ पोस्ट कोविड, एक्सट्रीम फटीग बिकॉज ऑफ कोविड, इंसोम्निया प्रॉब्लम्स,
इन सब में एक्यूपंक्चर जो है वो बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुआ है। और ये मैं नहीं कह रहा, आज आप पबमेड पे जाके देखिए और इतनी रिसर्च इसके ऊपर हो चुकी है कि जिसका कि कोई कहना नहीं है। और वर्ल्ड वाइड में डॉक्टर्स ही रिसर्च इस पे कर रहे हैं और कई डॉक्टर्स जर्मनी के, ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से, आप नाम लीजिए, सब जगह से एक्यूपंक्चर में लगे हुए हैं। और उनकी जो ये रिसर्च है वो ये कहती है ये बहुत ही साइंटिफिक सिस्टम है और इसको हमें ज्यादा से ज्यादा पॉपुलर करना चाहिए। बिकॉज वेस्टर्न मेडिसिन में जहाँ इवन सिंपल जैसे कंडीशन है आर्थराइटिस की, घुटनों के दर्द की, अब अर्ली स्टेज ऑफ आर्थराइटिस में एक्यूपंक्चर का जवाब ही नहीं। पर होता क्या है कि पेशेंट जो है वो सब जगह थक हार जाता है और उसको डॉक्टर कहते हैं भाई अब तो ट्राई कंपार्टमेंटल आर्थराइटिस हो गया है, अब तो नी रिप्लेसमेंट होगी, फिर वो डॉक्टर कपूर के पास आएंगे या उन जैसे और डॉक्टर्स के पास जाएंगे। तो उसमें एक्यूपंक्चर भी कुछ नहीं कर सकता बिकॉज आपके सारे ही कंपार्टमेंट्स खत्म हो चुके हैं। सो अर्ली डायग्नोसिस एंड पेशेंट कमिंग टू यू एट द राइट टाइम विल मेक द साइंस वेरी मच मोर पॉपुलर। मैं 25 साल से एक्यूपंक्चर का डिपार्टमेंट सर गंगाराम हॉस्पिटल में चला रहा हूँ और मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है बताते हुए कि जो चेयरमैन है हमारे हॉस्पिटल के डॉक्टर राणा और उससे पहले जो चेयरमैन है सबने मुझे सपोर्ट किया। और आज मैं कई अपने मेडिकल कोलीग्स जो कि गंगाराम हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं उनका ट्रीटमेंट करता हूँ एक्यूपंक्चर द्वारा एंड दे आर आल्सो वेरी इम्प्रेस्ड विद द फाइंडिंग्स। सो कहने का मतलब ये है कि एक्यूपंक्चर जो है वो सिर्फ पेन्स के लिए नहीं है, वो कई सारी बीमारियों के लिए है। अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं, मेरी वाइफ डॉक्टर सुनीता कपूर है, वो भी एक एलोपैथ है, लेडी हार्डिंग से हैं और उन्होंने जब एक्यूपंक्चर ज्वाइन किया मेरे साथ तो वो अब एक्यूपंक्चर को इनफर्टिलिटी में यूज करती है। तो वी गेट लॉट ऑफ फेल्ड केसेस ऑफ आईवीएफ एंड आईयूआई जो कि प्रेगनेंसी जिनकी नहीं हो पा रही थी विद द नॉर्मल रूटीन आईवीएफ, even they have been able to conceive with acupuncture। और even अगर हम नॉर्मल हेल्थ एक लेडी की देखते हैं बिकॉज ऑफ हॉर्मोन्स, बिकॉज आजकल डिलेड प्रेगनेंसीज हैं, डिलेड मैरिजेस हैं और उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें हम एक नॉर्मल प्रेगनेंसी भी कर पाते हैं बाय करेक्टिंग द हार्मोनल बैलेंस थ्रू एक्यूपंक्चर। तो कोई जरूरत नहीं होती है हमें बाहर से हार्मोन्स देने की और एक्यूपंक्चर द्वारा ही हम इसको बैलेंस को ठीक कर पाते हैं और एक नॉर्मल हेल्दी प्रेगनेंसी हो सकती है। तो ये जो अवेयरनेस है इसके ऊपर बहुत काम करना जरूरी है। अब इसके लिए नड्डा जी की टाइम में ही एक एपेक्स कमेटी बनाई गई और हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया एक्यूपंक्चर एज इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर। आई कैन टेल यू विद दैट श्योरिटी बिकॉज इट्स एन ऑफिस ऑर्डर नाउ फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च दैट एक्यूपंक्चर इज नाउ एन इंडिपेंडेंट हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया। उसके लिए जो कमेटी थी उसने तकरीबन 1.5 साल लगाया और एक रिपोर्ट दी। उस कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर वीएम कटोच थे जो कि एक्स डीजी थे, अब एक्स डीजी हैं आईसीएमआर के और बहुत ही रिनोन्ड अथॉरिटी हैं अपने टाइम के। और उन्होंने, और मैं वाइस चेयरमैन था और तकरीबन 10 और मेंबर्स थे which included the head of the CMC Ludhiana also. So a lot of eminent people were there in the committee and there were some professors from All India Institute also, and every one of them went through all these substantial scientific reports on acupuncture as well as the need to make it now independent. And the final report is out and the government of India has been, the report has been submitted to the government of India and it clearly states that acupuncture has to come under Ayush because it's a integrative system of healthcare. So इसका जो जगह है वो आयुष के अंदर ही है। तो अब आयुष मंत्रालय के पास ये हमारा फाइनल रिपोर्ट पहुंच चुकी है and sooner than later Ayush will take up acupuncture as an independent system of healthcare और उसके बाद ही इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी हमारी कंट्री में। बिकॉज सबसे बड़ी बात इसमें ये किशोर जी जो समझने वाली है कि इसमें ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है, फंडिंग की जरूरत नहीं है। अनलाइक माय मॉडर्न मेडिकल सिस्टम जहाँ पर अल्ट्रासाउंड लगाना है, एमआरआई मशीनें लगानी है, सीटी स्कैन लगाने हैं, आपको बहुत सारा मनी चाहिए होता है। इसमें आपको मनी की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैन पावर की जरूरत है, सिर्फ क्वालिफाइड मेडिकल पर्सनल की जरूरत है जो कि एक्यूपंक्चर कर सकें। और आज स्पोर्ट्स केयर में इतना एक्यूपंक्चर यूज करा जा रहा है वेस्टर्न वर्ल्ड में। कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं स्पोर्ट्स की जिसमें कि हम अननेसेसरी सर्जरीज भी कर देते हैं कई बार जहाँ की रिक्वायर्ड नहीं होती है। उनमें विदाउट सर्जिकल इंटरवेंशन वी कैन गेट दीज स्पोर्ट्स पर्सनल बैक ऑन द ग्राउंड without having to undergo any major surgical procedures. So it's a very, very effective and cost-effective therapy, जो कि हम
ग्रास रूट लेवल पे भी गांव में जाके दूर दूर तक छोटे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स में भी जो हमारे डॉक्टर्स आज काम कर रहे हैं, अगर उनको हम एक्यूपंक्चर सिखा दें साथ में, तो ये बहुत ही कामयाब चीज है। और डॉक्टर्स के लिए कोई बहुत लंबा कोर्स नहीं है ये। डॉक्टर्स के लिए जो हम आज की डेट में इग्नू के थ्रू ये कोर्स करते थे, अब एमिटी यूनिवर्सिटी के थ्रू हम ये कोर्स कंडक्ट कर रहे हैं। तो ये जो कोर्स है ये 1 साल के करीब का होता है, जिसमें कि टोटल जो सारा ऑनलाइन होता है मटेरियल लर्निंग वाला, और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग डॉक्टर्स के लिए हम 4 बार करते हैं साल में, जिसमें कि 10-10 दिन के लिए बुलाया जाता है डॉक्टर्स को और उनको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देते हैं हम एक्यूपंक्चर पे। आज एक्यूपंक्चर जो है, पहले बहुत एक फियर भी था कि एक्यूपंक्चर का नाम सुनते लोगों के दिमाग में आता था भाई सुई लगवानी पड़ेगी, अब वो वाला फियर भी जाता जा रहा है। उसका कारण ये है कि अब नीडल लेस एक्यूपंक्चर थेरेपीज भी अवेलेबल हैं, हमारे पास भी हैं, वर्ल्ड वाइड भी हैं। लेजर्स आर यूज्ड एंड दीज आर स्पेशल सॉफ्ट लेजर्स जिसे कहते हैं, विच आर यूज्ड एट एक्यूपंक्चर पॉइंट्स स्पेसिफिक, और उससे भी हमें उतने ही अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। ऐसे बच्चों के अंदर अगर हम एक्यूपंक्चर करना चाहें तो कलर थेरेपी है, जिसमें कि डिफरेंट कलर्स आर यूज्ड एट एक्यूपंक्चर पॉइंट्स, एंड ऑटिज्म जैसी कंडीशन के अंदर भी एक्यूपंक्चर द्वारा बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। डॉक्टर साहब आप मैंने पहले ही कहा था, ये इसमें कोई डाउट नहीं है कि एक्यूपंक्चर जो है वो बहुत ही इफेक्टिव पद्धति है। और डॉक्टर साहब मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि स्क्रीन पर आप आ जाएं, क्योंकि हम इस बातचीत से एक वीकली प्रोग्राम भी बनाते हैं जिसमें आपका वीडियो जरूरी होता है। तो आप रहेंगे तो वो उस वीडियो के आधार पर हम हेल्थ नामा एक वीकली शो बनाते हैं यूट्यूब चैनल पे, हेल्थ नामा बहुत पॉपुलर है, तो आप रहेंगे। तो मैं फिर वापस उसी सवाल पे आता हूँ। ये बहुत अच्छी बात है कि सर गंगाराम हॉस्पिटल में अलग डिपार्टमेंट एक्यूपंक्चर का है, तो ये कैसे पॉपुलराइज होगा बाकी बड़े अस्पतालों में, चाहे प्राइवेट अस्पताल हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, बाकी अस्पतालों में अलग कोई डिपार्टमेंट नहीं है, कैसे पॉपुलराइज होगा? सब कुछ हम पेशेंट पे छोड़ दें या हमारी कम्युनिटी, डॉक्टर्स की कम्युनिटी भी कुछ करे इस पे? सर बड़ी सिंपल सी बात है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें गवर्नमेंट का इनिशिएटिव बहुत जरूरी होता है, बिकॉज जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको पिकअप नहीं करेगी तब तक हम पॉपुलर नहीं कर सकते। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर सिर्फ अगर ये चाहे कि एक्यूपंक्चर को हम प्रमोट कर पाएंगे तो नहीं पॉसिबल होगा, बिकॉज अवेयरनेस सबसे इंपॉर्टेंट चीज। किशोर जी आप मानेंगे किसी भी साइंस के लिए आज आप आयुष को क्यों समझते हैं इतना इंपॉर्टेंट बॉडी माना जा रहा है? क्योंकि मोदी जी ने आयुष के लिए बहुत प्रमोशन करा। आयुष आज हर जगह बोर्ड्स, बिलबोर्ड नजर आते हैं जिसमें लिखा जाता है आयुर्वेदा से ये चीजें पॉसिबल है, योगा करें आपकी हेल्थ बेटर होगी, होम्योपैथी लीजिए इन बीमारियों के लिए। तो इसका मतलब है देयर इज अ कंसर्टेड कैंपेन which is being going on in the country, and Ayush is spending a lot of money to popularize the system. So जब तक हम एक इंडिविजुअल को, आज अब मैं को कॉमन बताऊं बात आपको कि एक पेशेंट मेरे पास आता है, वो कहता है सर आप वो प्रेशर से इलाज करते हैं, तो हम प्रेशर से नहीं करते। एक्यूप्रेशर इज अ डू इट योरसेल्फ टेक्निक, वो भी कोई भी किताब पढ़ के सिंपल एलिमेंट्स, जैसे किसी को नेक में स्प्रेन हो गया, बैक में स्प्रेन हो गया, उसमें तो एक्यूप्रेशर कामयाब है। बट एक्यूपंक्चर इज यूज्ड फॉर main medical stream diseases like a disc prolapse, like a sciatica, like a migraine. So ये diseases के लिए डॉक्टर क्वालिफाइड होगा और उसको साइंस के बारे में पता होगा, एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बारे में पता होगा, तभी वो प्रॉपर एक एक्यूपंक्चर टेक्निक द्वारा इलाज कर सकता है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है अवेयरनेस होना। एक हर इंडिविजुअल को ये पता होना चाहिए भाई एक्यूपंक्चर क्या चीज है, ये कैसे काम करता है, साइंस इसके बारे में क्या है। और आज ट्रेडिशनल मेथड से हम बहुत आगे आ चुके हैं। पहले ट्रेडिशनल मेथड्स होते थे टंग डायग्नोसिस और पल्स डायग्नोसिस, जो कि हमारे आयुष में भी माना जाता है। हमारी वैदिक ट्रांसक्रिप्शंस जो हैं वो आज भी शो करती हैं कि तकरीबन 4000 साल पहले वेदास में लिखा हुआ है कि सुई भेदन वाज यूज्ड एज अ फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट। सो प्रोबेबली कहीं ना कहीं एक्यूपंक्चर का ओरिजिन शायद इंडिया में ही हुआ है। बट जैसे जैसे समय बढ़ता गया और इसकी उपलब्धि होती गई, तो ये साइंस है एक। तो हमें उससे देखना ये नहीं है कि हमारे इंडिया में आया या चाइना में था या एशिया में था, हमें ये देखना एक साइंस है, और उस साइंस से अगर ह्यूमन बीइंग को बेनिफिट हो रहा है तो क्यों ना उसको हम ज्यादा से ज्यादा पॉपुलराइज करें। और इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नेतृत्व बनता है कि वो इस साइंस को जल्द से जल्द एक्सेप्ट करके आयुष के अंदर इसकी प्रमोशन करे। प्रमोशन करने से क्या होता है कि अवेयरनेस बढ़ती है,
तो क्या होगा, जैसे आज होम्योपैथी का या आयुर्वेदा का डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहां एक एक्यूपंक्चर का डिपार्टमेंट होगा, तो क्या होगा, एलोपैथ डॉक्टर, मेरे कोलीग्स हैं, क्लासमेट्स हैं जो ऑर्थोपेडिक के डॉक्टर्स हैं, वो कहते हैं हमारे पास रोज पेशेंट्स आते हैं नी जॉइंट पेन के लिए, एल्बो जॉइंट पेन के लिए, आर्थराइटिस के लिए, तो हमें क्या प्रॉब्लम है, हम उनको पेन किलर्स ना लिख के एक्यूपंक्चर में रेफर कर दिया करेंगे। देखिए, तो उससे अवेयरनेस तो आ चुकी है डॉक्टर्स कम्युनिटी में, बट द अवेलेबिलिटी इज वेरी वेरी लो. So unless we have more qualified practitioners, more people who are practicing, and more availability of qualified professionals who can be put in, and for me it is very easy because I am now practicing for 40 years. So for me to train whether 100 people or 5,000 people, it is the same. So training is the process to go forward and training more qualified professionals. For second line of जो लोग आते हैं इसमें, वो आते हैं डिप्लोमा एंड डिग्री होल्डर्स, जो कि आज वेस्टर्न वर्ल्ड में वो ऑलरेडी कर रहे हैं कि 12वीं के बाद एक कोर्स डेवलप हुआ है जो कि कम से कम नहीं तो 15 से 20 यूनिवर्सिटीज हैं वर्ल्ड में जो कि ऑलरेडी कंडक्ट करती हैं. आफ्टर क्लास 12 देयर इज अ 5-year डिग्री कोर्स ऑन एक्यूपंक्चर. तो हम सेम लाइंस पे ऑलरेडी अपनी कमेटी की रिपोर्ट में बता चुके हैं. बहुत सही मुद्दा, ऐसे ही करना चाहिए. बहुत सही मुद्दा आपने उठाया डॉक्टर साहब. मैं डॉक्टर प्रोफेसर चंद्रकांत पांडव जी से पूछना चाहूंगा कि आखिर मोदी जी का जो होलिस्टिक मेडिसिन का जो सपना है वो कैसे पूरा होगा. आप एक राष्ट्रभक्त डॉक्टर हैं और आप इस पे बेहतर प्रकाश डाल सकते हैं. नमस्ते, नमस्कार, नमस्कार. शंकर. यस. नमस्कार. Namaskar. Har Har Shambhu has become a viral song. There are 5 million people who have said Har Har Shambhu. आपको प्रणाम. किशोर, आप तो श्री कृष्ण है. पांडव के बिना, पांडव without Sri Krishna are zero. With Sri Krishna they are hero. Dr. Raman Kapoor, I want to share with you, being Pandav, I have studied Mahabharata very well. The first practitioner of acupuncture was Arjun. Bhishma Pitama के मृत्यु, he could die, he had to die according to when he wanted to die. तो उन्होंने बाण में जो बनाई शैया, तो उस acupressure के बाण के ऊपर उन्होंने, he was the first practitioner of acupuncture. And I went to China in 80s. They gave the same importance to acupuncture as to modern medicine. Same importance. तो आपका जो डॉक्टर नड्डा ने जो कमेटी की और इसको भी for the very timely they have given recognition to acupuncture, that is very creditable from you. I just want to carry your concept of integrated system of medicine. Kishore, there is only one system of medicine that addresses the question of your pain and suffering, whether it's allopathy, naturopathy, Ayurveda, Siddha, Unani, उससे patient से कुछ लेना देना नहीं है. He has pain and suffering and he wants to get relief of pain and suffering. So Narendra Modi ji has caused a kranti in establishing Ayush department. और इसमें से मैं आपको बता रहा हूँ, योग के लिए आपको पता है कि 21 June is International Yoga Din. For the first time in United General Assembly, 178 countries supported International Yoga Din. पूरी तरह से किया. This is history again. So Narendra Modi is not only working out various public health schemes, but he's also trying to support the historic, well-practiced systems of medicine. There are two questions I want to put before you. First is, I've written an article that the Indian doctors don't have time to listen. I also told in that very well conducted meeting in Meridian, the doctors must learn the art of listening. The second thing is, all pathies are necessary and relevant in system of disease. But what you lack is sympathy, empathy, passion, and compassion. इसमें कमी है. So Narendra Modi ji ke, for the first time, there are non-health determinants of health.
Swachh Bharat Mission. For the first time, we launched it. Sanitation and water supply. In Western countries, United Kingdom and USA, they addressed this problem of Swachh Bharat Mission 200 years back. So Modi ji started that. That's very important intervention, public health intervention. In fact, we are going back to the past. Mohenjo-daro and Harappa had public baths, closed drains. ये हमारी संस्कृति उसको हम भूल गए. The second thing is he started National Nutrition Mission, and which Kishore, I want to say with all humility, I'm a member of that National Nutrition Mission. So water supply and sanitation mission, these are non-health determinants of health. Ayushman Bharat, again, the third intervention. I've written an article, Narendra Modi as a public health person who was introduced in India in the last, since 2014, is a public health champion. Uski copy मैं आपको दे दूंगा. Narendra Modi as a public health champion. तो उन्होंने देश में स्वास्थ्य न्यूट्रिशन में एक क्रांति लाई. ये रहा आपका सवाल का जवाब. Mr. Shankar. Thank you, Kishore. My first question to Dr. Raman Kapoor is, what exactly is the science behind acupuncture? Sir, the science behind acupuncture is that acupuncture word comes from, it's a Greek word, acus and puncture, whereas acus means a needle and puncture means to penetrate. So basically, the science involves penetration of a needle at specific points. So in our body, there are over 800 acupuncture points which are now identified. These acupuncture points are located along specific channels, which are known as meridians. Say, for example, there is a lung meridian. So there are points on the lung meridian. Now that lung meridian acupuncture point can be used not only to treat a lung disease, but can also be used to treat any disorder along that channel pathway. Say, for example, a patient has got pain along the pathway of the lung channel. So you can use acupuncture points on that. The science is very clear. There are different theories now which have been confirmed by scientific studies that there is a hormonal activity which can be modulated with acupuncture through the brain. Again, everything is central nervous system regulated. Then we also know that there are natural pain-killing substances known as serotonins and endorphins, which are always present in our brain. So what acupuncture does is it stimulates the release of these brain to the area of pain. So pain modulation is done like that. Then it has also got a muscle building effect. So for that, there are specific acupuncture points which send the signal to the brain to create an increased blood supply to that particular area to build the muscle mass. So similarly, there are immunity. Now, today, you'll be actually surprised to know that a lot of patients who are coming to us are also coming for building up the immunity. So the immune system is a very important part of our process in our body. So if our immunity is good, so a lot of time we talk about vitamin C, a lot of time we talk about good sanitation. These are all very important. But then every individual body is made separately. And suppose we realize that a patient's immune system is very low, so we need to give him specific acupuncture point to build up his immune system. So all is very scientific now. I did recently a study with our Dr. Mahajan at Mahajan Imaging Center. He's a renowned man and a colleague of mine at Gangaram Hospital. We did an fMRI study. So fMRI is a functional MRI in which what we do is we can see the functioning of each part of our brain. Say, for example, a patient has got a hearing problem. So we can go to the hearing area in the brain to see whether there is activity in the brain, in the hearing area of the brain. So it came to my mind, and I had already seen a study done by a doctor in Cornell University in the US, and I wanted to replicate it. So I talked to Dr. Mahajan. He was very open to the idea. So what we did is we took a patient of ours who had nerve deafness, means
he had lost hearing in one of the ears. And as a result of that hearing loss, he also used to have a lot of tinnitus in his ears. So there was a constant buzzing sound in the ear. So what we did was we pushed the patient into the fMRI machine and looked at the functioning of the left ear where he was complaining. So the left ear, the hearing area in the scalp, in the brain, showed very reduced intensity of functioning. Then what we did is we put a few acupuncture needles, plastered them because otherwise in a MRI machine they could come out, and we pushed this patient back into the machine. And lo and behold, even the radiologists were surprised to see there was an immediate increase in the activity in the hearing area. I replicated the same thing in a patient with optic nerve atrophy and did needling in the vision area of the scalp, and we could see the same results. So there is a plethora of scientific evidence to prove that acupuncture is a science and is here to stay, and we need to do it at the earliest possible to integrate it, because integrative medicine is the only way to go forward. Even in my own hospital, my cardiologists who face patients with intractable hiccups after a cardiac surgery call me in, because even after giving largectal injections, they are unable to control the hiccups. So just by giving a few acupuncture needles, I'm able to control them. So why not use a technology which is non-invasive, non-injectable, and still gets you the best results? So my concept is very simple. Try and train as many people as you can. There are now acupuncturists available worldwide, even in the emergency room of hospitals in USA. Even every infertility team in the US and UK and Canada that I have visited, every infertility team has to have a medical acupuncturist as a part of the team. So this is the level which they have reached to. I don't know where we are looking at. We are very slow, I must tell you, and we take a lot of time to change our mindset. And there is always that feeling that, this science will overtake that science. It is not like that. We need to understand that it is for the good of the public that we are going to do this. So let us try and initiate a thing which is always going to be good for public health, and put the system in place and try and get, because it is going to obviously create more employment also for people. So yes, we are not only looking at what is most important is to integrate this particular wonderful science into the Indian system. And I hope your program of training more people would fetch benefit. And I also hope that your training will also go for online training programs so that more and more people can benefit out of it. Correct. Dr. Pandav, Dr. Pandav, I'll close this session with your concluding comment. Raman Kapoor, आपसे मिलने के मुझे बड़ी खुशी है. In the next 15 minutes, I got Parkinsonism, and reflexology is coming to train me. Reflexologist, basically, he's doing acupressure. I also want to tell you that music has a very important role, and this I am going to demonstrate to you. Where medicine fails, music heals. Now, when I get up from my chair, I need help. But if I play Shiv Tandav, I can get up and dance. Wonderful. So music kabara, I'll touch base with you, Dr. Raman Kapoor and Dr. Mahajan. You can do my fMRI. Sure. हम आपको डांस करके दिखा सकते हैं, डांस. किशोर. Thank you, sir. बहुत बढ़िया. It was wonderful. Only thing is, Dr. Raman Kapoor, please don't put Dr. Pandav in a dancing pose under the fMRI. Difficult for him otherwise. Yes, it will be very difficult. But worth trying if he's willing to be your patient. Of course, nothing like that. And it is an honor of Heal to put you both together on one platform for trying out. Namaskar. Thank you very much. Kishore or Har Har Mahadev. Namaskar. Thank you very much. Thank you. Sir. Thank you, Kishore for inviting me to this platform. Thank you. And I'm quite confident that with your support, we should be able to do more such interactive talks and get more people to be able to understand the science. Because today, I wanted to delve more deeper into the science part of it. I had prepared a PowerPoint also, but I think today was a very good interactive session. So next time, probably sometime, whenever it's convenient for you, I would like to do a PowerPoint also
to be able to make my own colleagues aware, because Right, I sir. find that even many of our colleagues who are in the Western system hardly know much about acupuncture. So that awareness, as I said to you, is the important route. Unless there is awareness, even in the medical professional and in the layman, we cannot go forward in promoting the science. So that's the way. I will bring you to for another deep session so that we can have an interaction with you. Thank you very much. Great, sir. Thank you very much, sir. Shankar, I have written an editorial, Dr. Raman Kapoor, on integrated system of medicine. मैंने एक editorial लिखा है, वो आपको मैं भेज दूँ. Please forward करें sir. Please forward. Thank you. ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे. ये दोस्ती छोड़ेंगे. Thank you. Yes, Kishore. थैंक यू सर. हमें लगता है कि डॉक्टर प्रोफेसर CS पांडव के साथ हमें अलग से एक सेशन करना पड़ेगा, जिसमें म्यूजिक की भी बात होगी और हेल्थ की तो बात होगी, और म्यूजिक को हेल्थ से कनेक्ट करके कुछ बढ़िया परफॉर्मेंस देखेंगे डॉक्टर पांडव से. अच्छा लगेगा. और ये वो सेशन हमारा पूरा 1 घंटे का हो, उससे कम में काम नहीं चलेगा. थैंक यू डॉक्टर पांडव. थैंक यू डॉक्टर कपूर, आप हमारे साथ शामिल हुए. हम आपको बता दें कि आज जाने माने डॉक्टर्स, खासकर पद्मा डॉक्टर्स हमारे शो में रहे. उन्होंने हमारे शो की शोभा बढ़ाई और बहुत ही अच्छी बातें बताई देश के बारे में, देश के हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में. अगले सप्ताह हम एक नए विषय के साथ आएंगे अगले रविवार को सुबह 8 बजे. तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए. नमस्कार. जय हिंद. आपको टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ. छावी एंड योर टीम मेंबर्स देना चाहेंगे हम भी. थैंक यू सर. बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड है, एंड द वे यू आर डूइंग इट, वी आर डेफिनेट दैट वी विल बी एबल टू हेल्प मोर एंड मोर पीपल एंड क्रिएट मोर अवेयरनेस. Thank you. And thanks to your team, Chavi and her colleagues, for making this show happen. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir. Bye.